start. I've seen a lot about the internet growth, and I'll try to add value to the conversation. And I'd like to hand it off to each of the panelists to please introduce themselves. And I think we'll start from here, Mohammed. Seriously, around January last year. By seriously, I mean that I started writing on a topic. And the topic, like I said, is creative self-employment. I talk about creativity, I talk about self, and I talk about employment. That's why the name. And it's a play with words, actually. But the thing is, that's one of the blogs that I run. Last year, my blog that is now somewhat not working is car advice, that one, the auto blog last year. The thing with the gathering here is that what we must all realize, and I think Monas Bhai here also tried to point out, is that this is very new for us. Everyone is just starting out. We are, हमें काफ़ी कुछ अभी सीखना है, काफ़ी गलतियाँ करनी और हैं, starting from the award ceremony all the way down to the blog itself. जो बीच में सारे loop I've got a long story to tell which I want. I've been a serial entrepreneur failing almost all my startups. I used to work for the government. I've been involved heavily in internet public policy for the past nearly a decade now. My intentions are to at least help my country and other developing countries to evolve internet policies which actually are pro-people and help people evolve socially, economically, and politically online. And as part of that effort, I believe that we should also be facilitated if you want this to happen. And for that, we started a mission to bringing about free and open source software into Pakistan and into other countries as well. You must have heard about Ubuntu Linux. That is one of the communities we help build strong in Pakistan. You must have heard about WordPress communities, Joomla communities, Drupal communities. The second most important thing I do is I help training governments, large organizations, not companies, but mostly those organizations which are close to people, into delivering Linux and open source. And as part of that, as a big international UN program, we go into countries, everything from Pakistan, Laos, China, Afghanistan, and we help the government and organizations and universities shift over to Linux and open source. You must have, I don't know if any of you must have been involved in 2005. We ran one of the largest free open source training programs across Pakistan, nearly training 10,000 people, certifying 7,000 people on Linux desktop. We had trained like 600 organizations. Every government industry functionally was somehow introduced to open source. And now we have a vibrant open source culture in the country. On the internet governance side, I've been advising the Internet Governance Forum. This is a global space for dialogue across the world. It happens on a rotation basis. It rotates between countries and developing countries. And the issue being discussed over there is to keep the internet open. Why? Because a lot of people can end up repressed by their governments if the internet is not kept open. Second thing, concerns about copyrights and IP infringements. Something called the SOPA agreement is going on in the US. We're globally advocating against that. Why? Because if America has the unilateral right to shut down domains, trust me, all of your blogs will be shut down in Pakistan. You are infringing intellectual ideas from the US in one way or the other, because we have free trade agreement with signatories. On the other hand, I'm a blogger, I'm a full-time blogger, I write for social media in Pakistan. I committed to contributing all my research for the past 10 years, free of cost to Pakistani society, and I continue to do those. I was nominated in the social blog category, which is called Internet Governance, and thank you so much. It's a pleasure to be here. My name is to take care of news which are related to business and economy. So, talking very boring. I sometimes face television screen just to scare the children away. I've been a part of the team which initiated the blog site for India television about 6 months back. And the reason why
areas and in areas which have had a pretty bad ride so far. And so far the discussion the panelists have been having about how important the blogs are, you often hear a lot of discussion that blogs really don't matter, they are just opinions by different people. And that is the sort of opinion that people used to have. That is changing now. And at the same time, one of our colleagues just said that we need to start taking our blog seriously, and I agree with him completely. The standard of our blogs is not perfect. It's not going to be perfect for a very long time to come. But in all due honesty, events like Pakistan Blog Awards and others at least give bloggers some hope that they can make something out of it. You will not take something seriously unless you see your sustainability in it in the long run. It has to be commercially viable. For the first time after a very long time, we can see our blogs and our social media ventures actually becoming viable. And courtesy this award, I would like to say the first round we did was, at least I pumped in a huge amount of money into my blog and converted it into an independent blogging website. Not just with my blogs, with a proper editorial board, about 50 different bloggers on the panel, and that only happened because I took it seriously and Pakistan Blog Awards gave me something. So blogging matters. Their opinions are there, but at least independent opinions are gaining momentum now. They're being taken seriously as compared to earlier instances. And that's where I think all of us who are part of this blogging community play a bigger role than we actually imagine. So that's all I have to say. Our local audiences, they should be metalinguals. If you want to focus on the international audience, we really have to put an effort into English language. Great. If I could just take that further, and it's a fantastic point because most of the blogs I'm reading from Pakistan are English. But if you look at the traffic statistics of local websites, some of the most trafficked websites in Pakistan are Urdu newspapers. Jam, Express ko dekh le, tremendous traffic, so there's appetite from your readers for Urdu. So, Adnan, I want to ask you, and also Mohammed, you guys are avid bloggers. Why not blog in Urdu? It's nothing to do with technology in that sense. It's more to do with culture. अगर हमारे culture में, for example, Chinese keyboards, they don't even know English and they're so ahead in technology. It's not a question of because a lot of people पहले भी ये बात हुई थी Farhan Masood, and then they also talked about this, that there's a lack of technology. The reason there's a lack of technology for this is because there is lack of interest. And the culture in itself, आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, the door opens, आप उर्दू में बात करते हैं, आपको तो पता ही नहीं. And God forbid तुसी पंजाबी च करना शुरू कर दो, तो तुसी ते भाई कोट क्यों पाया? मतलब that thing is 100% there. I'm sure all of us sitting here and there will agree to this fact. Okay? English is the door opener, and is still considered that. So if that is there, and I don't know how to remove that. मैं अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ for a very specific, clear reason, and if that cannot be removed, I don't see Urdu playing a big part. He's right that आपकी वो language problem and all that is there, but that is why those who don't have a problem will succeed. So I don't see the problem going away as we take further technology. So not only you are influencing a lot of people through your writing, the current affairs. Most of the people that you influence inside the country in Pakistan, I'm assuming, would be a little bit older and maybe more conversant in Urdu. Yeah. Generally speaking, they should be older and more knowledgeable as far as the way things are concerned in Pakistan. But surprisingly enough, most of them are young people. The problem with our mainstream media is it gives you what it sees. I've been a journalist. I've spent a good year in Geo. I used to be a journalist. I have a great idea of how news is made. News is made on the basis of whatever is happening. That is news. The difference with current affairs, or difference with the way we blog and a lot of other people blog, is we try explaining why we got to that point. We have a tendency in Pakistan कि एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर उसका रोना डालना शुरू कर देते हैं. तो ये नहीं सोचना किसी ने कि यहाँ तक पहुंचे किस तरह से. और वो जो पीछे जो 3 दफा जो बेवकूफियां मारी हैं या जो गलतियां हुई हैं, वो नहीं हमने देखना. हमने देखना है कि जो अभी जहाँ पे खड़े हैं क्यों खड़े हैं. तो टू अ लार्ज एक्सटेंट ओवरऑल जो ब्लॉग्स हैं,
एटलीस्ट जिन लोगों की लीडरशिप बिल्डअप हो रही है वो इस बुनियाद पे हो रही है, क्योंकि मैं लोगों से खुद पूछूं कि आप पढ़ते क्यों हैं, यू आर क्यूरियस, और उसकी बुनियाद ये होती है ज्यादातर कि जी हम लोग बैकग्राउंड समझना चाहते हैं, हमें पता है क्या हो रहा है, बट हम लोग उसकी बुनियाद समझना चाह रहे हैं, जो टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड ऑन द सेकंड पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँ, उर्दू में क्यों नहीं लिखते, उसका बहुत बड़ा एक मसला फॉन्ट है। हमारे पास अभी तक उर्दू का एक स्टडी फॉन्ट नहीं है, या तो वो हमारे पास अरबिक का फॉन्ट है जो कि लेट लेट के लिखा हुआ है, या ये अखबारों वाला फॉन्ट है जो कि ये ऊपर होती है, दो नुकते नीचे होते हैं। हमारे पास उसका स्टडी फॉन्ट नहीं आया, ना कभी किसी ने हमें ट्रेन किया, ना पढ़ाया, वही बात वाली कभी नहीं किया। बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि रोजनामा पाकिस्तान या रोजनामा औसाफ की जो हेड्स हैं वो कंबाइंड प्रीटी मच एवरी सिंगल इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेड से ज्यादा होती है क्योंकि लोग पढ़ते हैं। Absolutely, absolutely right. जब पहला प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको प्रपोज किया गया था जब जो बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जो काम कर रहे हैं जॉब्स के हवाले से, वो थोड़ा सा आगे निकल गए। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन से पिक करती हैं जब वो कंपेटिटर्स पे काम कर रहा होता है, और शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी चीज़ की अहमियत का इदराक करती हैं जब वो इस तरह से हाथ टोटली बेस्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं की सर्वेलेंस बेहतर है हमारी, जो हमने ये गैदर कर लिया था कि अब जो है वो एक और कवर कर सकते। अब यहाँ पे जो तरीका है वो इस तरह से है कि हमें इस बात का तयन करने में मुश्किल है कि हम इसको इस तरह से देखते हैं क्या ये हमारे एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे हमारी सोच बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हम ऐसे चलेंगे कि बाकी लोग कितना रहेंगे, क्या ये हमारे जो मेन स्ट्रीम साहब भी हमारे साथ जो काम करते हैं क्या उनकी तवज्जो होनी चाहिए होगा, या आम टाइम तो हमने क्या वस्तु कहाँ करेंगे, क्या वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पसंद करेंगे। तो जो हमारी इंटरनल टीम से पहले बैठी थी उसका जवाब था मैं सिर्फ एक मैं था, एक और साथ बाकी काफी हमारे कोई खास ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तो हम लोगों ने एक काम किया 6 months ऑनवर्ड सरप्राइजिंगली जो हमारे बड़े नाम हमारे पास आपको हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप हमारे राइट फॉर यू, वी वांट टू राइट फॉर यू, और इसमें चीज भी हुआ कि जाहिर है इंटरनेट पे शुरू होता है, लेकिन इससे कभी 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 आता है कि वो स्पेस होती है, हमें तो मादर में भी बड़ी जल्दी मौका दे थोड़ा हमें टाइम देते काम किया। एक बात जो यहाँ कही गई है वो मुझे हवाले से लेकिन आसान की बात है, ये बात जो यहाँ पे कही गई है जब आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो आखिरी दरवाजा जरूर होगा, आपको एक इंग्लिश का जरूर शामिल किया जाता है, समझा जाता है, लेकिन बात यह है कि इंटरनली अगर मुझे भी खबर देखनी होती है तो मैं किसी अंग्रेजी अखबार में कई बार भी देखता हूँ, मैं शायद से चैनल पर देखती हूँ, यूट्यूब पर देखती हूँ, आज में देखती हूँ, एक्सप्रेस पर देखती हूँ, क्योंकि मेरी दिमाग में तारीफ है, नई दिमाग होकर पैदा होता है, मैंने कोई आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। अब मेरी ड्यूटी है रोजाना आर्टिकल्स 18 मैंने पढ़ने होते हैं, तकरीबन सबके मैंने आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, बट नेचुरली मैं पहले बिजनेस रिकॉर्डर तो पढ़ना ही होता है क्योंकि वो हमारी बाइबल है, लेकिन उसके बाद मैं उर्दू अखबार पढ़ता हूँ, उर्दू अखबार पढ़ता हूँ। ओपिनियन बिल्डर आज भी हमारे पाकिस्तान में जो कॉलमिस्ट है वो है वही ओपिनियन बिल्डर है। अंग्रेजी का कॉलम पढ़ के आप ये जरूर कह सकते हैं अपने बच्चों से कि आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी, आपको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, नॉट ऑल हैं बड़े अच्छे स्कूल, बट बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स अभी भी उनको मानने लगते हैं। तो जैसे कि कहा तो ठीक बात है, उनकी भी ज्यादा होगी, अलबत्ता तकनीकी मसाइल जो हैं वो भी अभी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है कि आप आराम से उसको कॉपी पेस्ट करें और बगैर उल्टे हुए जो है ऐसा भी तरीका चाहती है। फराज हसन का अपने नाम भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे बहुत इंतजाम में 1997 में बात यूज किया था, लेकिन उसका भी बड़ा मुश्किल सॉफ्टवेयर था, मैं उसके साथ काम नहीं करता रहा, बड़ा मुश्किल था, हमने एक जमाने में उर्दू भाषा में नाकामी से मुश्किल
लेकिन उसमें जो मसाइल थे वो यही थे कि आप उसको किस तरीके से करेंगे, फिर हम इमेजेस अपलोड करते थे, आप इमेजेस अपलोड करते हैं उसको गूगल भी पकड़ता है जैसे की वजह से बड़ी मसाइल अभी मौजूद है। लेकिन ऑफ द बात ये जाने की है कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के बात करते हैं उनको बात का खराब हो गया है कि एक नई काम बनाई है और जितनी अभी इज्जत देनी चाहिए शायद नहीं दी जा रही, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर। Thank you very much. I think please go ahead. ऐड करना चाहूँगा काफी बड़ी लीडर पॉलिसी में मैं भी चाहता हूँ कि उर्दू में कॉन्टेंट कर सकूँ। एक जो चैलेंज आ रहा है कि जो अभी ओपिनियन बिल्डर्स या लीडर्स हैं जो उर्दू से आ रहे हैं वो कन्वेंशनल मीडिया की लीडरशिप की वजह से है। अभी जो कन्वेंशनल मीडिया में लीडरशिप की जियो की जंग की एग्जैक्टली आज की है और वो रहेगी और वो बिल्कुल रहेगी। मगर बहुत सारे लोग मैं डिमांड के परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ अगेन द डिफिकल्टी टाइपिंग उर्दू वो सर्च भी नहीं कर पाते उर्दू को। ना सिर्फ लिखने का मसला है, सो सप्लाई का इशू है, डिमांड की साइड पर इशू है। तो वो सर्च के अंदर उन्होंने जब टाइप करना है तो वो लिख के और तो गूगल उर्दू है और वो सपोर्ट करता है और कीबोर्ड भी खोलता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता और वो उस वजह से क्योंकि बहुत सारा कॉन्टेंट एग्जैक्टली बहुत सारा कॉन्टेंट इमेज में डला हुआ है तो वो अभी सर्चेबल ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे आर्काइव्स जो हैं और अभी तक किसी ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया और ड्यू रिस्पेक्ट अभी हम वो सेसमी स्पीड को हम डिजिटाइज पाकिस्तान के लिए कस्टमाइज करेंगे, मगर हमने हमारी जो कैसेट कहानी और वो जिस तरह की चीजें थी जो उर्दू की हमारी साइंस है वो किसी ने फॉर्मली नहीं डाली तक इन रियल फॉर्मेट जो ओरिजिनल पब्लिशर्स है, लोगों ने कॉम्पिटिशन शुरू किया। तो ये कॉन्टेंट की आर्काइव अगर आप मुझे जी प्लीज आप ये बैठे हुए हम लोग भी बैठे हुए क्या कोई तरीका हो सकता है वैसे कि एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि फिर अगर हम आज लोग बैठ के कोई पत्र की बना लेते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, क्या उस पर काम किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज है जो नहीं किया सकती फिर आपको बनाना है? उसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है कि आई थिंक दैट गोज बैक टू द नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी इशू कि आपकी लैंग्वेज भी ग्रो नहीं की है। तो अगर आप बहुत सारा कॉन्टेंट उर्दू में लेटेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें आज ज़्यादा इंग्लिश यूज करें। एक और चैलेंज भी है उर्दू का स्ट्रक्चर तो चाहिए उधर आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट करें। अगर हमारे एजुकेशन में उसका पार्ट बना दिया जाए तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट रहेगा। मेरे ख्याल में आप इसका ज़्यादा बॉटलनेक का कौन सी एक चीज अगर वो ठीक कर दें उर्दू में कॉन्टेंट। तो दिस इज अ डिबेट दैट आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी हाईलाइटिंग हुई है यहाँ पर। तो स्टेट बैंक पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ जरूरत मास्टर, वहाँ पर एक चीज देखी थी कि आप लोग जितना पैसा खर्च करते हैं ना उसके कर्जे का एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और आप क्रेडिट कार्ड लीज एवरीथिंग वो स्टैंडर्डाइज है। पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन उसको मैनेज करती है तो सब बैंक के लिए इक्वल है, उसी को डेटा चेक कहते हैं जब आप नया अकाउंट खुलवाते हैं। मेरे ज़हन में वही चीज बार बार चलती है ओपन सोर्स के हवाले में कि जो कम्युनिटी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब तक हम लोग इकट्ठे होकर न्यूज मीडिया सब लोग इकट्ठे होकर हम नहीं लेके चलेंगे ना वो डिफैक्टो स्टैंडर्ड, डिफैक्टो कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को, गवर्नमेंट का सेट किया हुआ या ISO स्टैंडर्ड नहीं होता, तो हमें डिफैक्टो की तरफ काम करना पड़ेगा इकट्ठे मिलके, फिर ये एवोल्यूशन स्टार्ट होगी। दूसरा केस लिनक्स को उर्दू कर 2007 में हमने उबंटू लिनक्स को उर्दू में कर दिया था, जीनोम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सो फोर्थ। मजेदार बात, पाकिस्तान से कोई सॉफ्टवेयर उर्दू के अंदर नहीं लोकलाइज हो रहा, सारा इंडिया से आ रहा है। वो अपनी 5 लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करते करते उनकी जो CDAC सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग है वो उर्दू भी बीच में कर देता था कि वो वहाँ पे फिर काफी बड़ी आबादी है जो उर्दू बोलती है। तो ये नीड बेस्ड है। जब मैंने ये सब्जेक्ट हमेशा छेड़ता हूँ उर्दू वाला, प्रॉब्लम ये है कि जो अगर तो आपने ओपिनियन बिल्डिंग करनी है, आपने कॉन्टेंट भेजना है, प्लीज डू इट इन इंग्लिश, लेकिन अगर ओपिनियन बिल्ड करना है, लोगों को इंक्लूजन में लेके आना है, इंटरनेट कल्चर जिसको मैं भी मिस करता हूँ आप लोग भी मिस करते हैं, अगर इंटरनेट कल्चर डेवलप करना है पाकिस्तान में तो वो हमारी अपनी मादरी जुबानों के अंदर होना है, वो इंग्लिश के अंदर नहीं होना। 66% आबादी रूरल रीजन में रहती है जिसकी 30 to 40% आबादी यंगस्टर्स है और वो इंटरनेट कैफेज जाते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, ओपिनियन उनकी अपनी लैंग्वेजेस में पाती है। अच्छा पॉइंट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। उसकी मोबिलाइजेशन भी की उन्होंने। बहुत शुक्रिया। आई थिंक जी नहीं, आई थिंक वी अंडरस्टैंड कि बहुत सी टूल्स अभी अवेलेबल हैं सर उसमें जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पॉइंट ये है प्रॉब्लम ये है कि उर्दू फॉन्ट्स के ऑनर्स अवेलेबल नहीं है,
Please. But I think again, we all think the same thing here. We do not have to be overwhelmed with what we need is a very simple starting point somewhere which can be recognized and can be read. Can be bought on Google, can be easy code. The easy code font, unfortunately, though it's available, so it's very hard. I get it most people feel that it's so fluid, it's hard to use. Then one, as pointing out, hard to actually write. That's the main problem. If I write because I have practiced for quite a while, but if you have keyboard, English keyboard, and you don't know how to write, it will take you a while to get it. These are the issues which are basically not being addressed in the place that are वो मेरे अभी भी यही ख्याल है कि अगर हमने सही मानों में अगर पाकिस्तान के इंटरनेट को आगे बढ़ाना है कंटेंट वाइज उसको उर्दू में लेके जाना है और अभी ऐसे टूल्स मौजूद नहीं है बहुत आसानी से आप अलाउ करें कि आप अपना उर्दू So, since we are talking about the frictions which are producing because of all these things, जो कि technologies में हमने बात की है, maybe fonts नहीं है, whatever the problems are. So, in my humble opinion, rather it is a question कि why don't we add Urdu in the form of audio? मतलब मैं अपने blog में Urdu audio books cater कर रही हूँ. These are for the kids. जो कि उर्दू लिटरेचर में जो मास्टरपीसेस हैं जो अवेलेबल हैं और पूरे बच्चे जो हैं यूजुअली उनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है या और भी कुछ वजूहात हैं लेकिन अगर हम उर्दू को बचाना चाहते हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम ऑडियो वर्जन का भी यूज कर सकते हैं इट इज ईजियर So the question is, why not add audio to your blogs and more specifically Urdu? Sorry? Urdu. AdSense में पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते. Okay, that's खेतों में जाए मजदूर काम कर रहे होते हैं उन्होंने डुब्बी लगाई हुई होती है ठीक है ना हर बंदे ने मोबाइल पे रेडियो सुन रहा होता है तो इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑडियो बुक्स विद दैट और मतलब एक पूरा एक इकोसिस्टम एक खड़ा एकदम से खड़ा हो जाता है विच इज वेरी मोनेटाइजेबल मतलब उसको आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं बिकॉज नो वन एल्स इज इन दैट फील्ड तो वो एक दोनों चीजें ऐड हो सकती हैं ऑपरेशन टू साइन इन हुआ क्या है एक चीज आ गई जिसे कहते हैं इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स IDNs मतलब क्या है डॉट पाकिस्तान उर्दू स्क्रिप्ट में आ रहा है और गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रही है इसी तरह जो भी डोमेन्स पाकिस्तानी होंगी वो उर्दू में लिखनी जानी शुरू हो जाएगी दैट इज अ ह्यूज मार्केट दैट इज बिलियंस ऑफ ये व्हाट यू कॉल इट एवरीथिंग राइट मैं इतना एक्साइटेड क्यों इतना उसकी बात करते हुए मैं इसका काम करता हूँ मैं एशिया के इश्यूज को लेके चल रहा हूँ इससे एक और एप्लीकेशन आ रही है इसका मतलब है कि इंटरनेट की रीडिंग बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल हो जाएगी इसका मतलब है कि हर देयर इज मैसिव अपॉर्चुनिटी कि अभी शुरू हो जाओ वरना रेस से आप 1.5 साल के बाद आउट हो जाओगे दूसरी चीज जो इंटरनेट में हुई है .com .org खत्म पता है आपको इस बात का ये .com .net every nut is finished right why are we finishing this the net is again innovating दुनिया में जो रिसेशन आया ना it has destroyed a lot of things stuff you don't know about but the innovation factor of the knowledge economy is being sought through the internet and because of that companies organizations worldwide are pushing अब domains क्या होंगी .ibm pakistan.ibm पाकिस्तान का IBM खुल जाएगा Google की सारी सबसे .google आएंगी 500 एप्लीकेशन हो चुकी है जनवरी के अंदर इसमें एप्लीकेशन राउंड शुरू हो चुका है 6 महीने के अंदर 500 नई इंटरनेट रजिस्ट्री खुलेगी .com एक रजिस्ट्री है 500 आने लगी है पूरा इंटरनेट का जो मॉडल है वो इवॉल्व कर रहा है इफ यू आर नॉट देयर यू आर नॉट प्लेइंग बिकॉज डोमेन्स विल नाउ बी .cnn वेयर इज पाकिस्तान ऑल ऑफ यू ब्लॉगर्स विल बी ऑन .pakistan ठीक है दिस इज हाउ इट्स इवॉल्विंग सेकंड थिंग फरहान आपको द क्वेश्चन फरहान मसूद इज अ पर्सन टू वॉच I believe that guy is इसलिए नहीं कि मेरा कॉलेज फेलो था इसलिए कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सप्लोर कर रहा है विजुअली और ऑडियो को आपका विकीपीडिया का भी उर्दू के अंदर जैसे कि आर्टिकल्स आने शुरू हो गए आप लोग ही कंट्रीब्यूट करें विकीपीडिया अमेरिका से नहीं बन रहा
आप लोग यहाँ से काट के कर रहे हैं, आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्डाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जो पब्लिक पॉलिसी उससे अपनी आवाज उठानी है फील्ड तक, 2 नए मॉडल्स आ चुके हैं। IVR ब्लॉगिंग, नाम सुना है कभी? इत्तेफाक हुआ है IVR का? इस्लामाबाद में ह्यूज कंपनीज बैठी हुई हैं जो सिर्फ उर्दू कंटेंट IVR के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है। ये इंटीग्रेटेड वॉइस रिले होता है, जब आप फोन पे आप गाने सुनते हैं और क्लब्स बने हुए दोस्तों के, अपने क्या क्या हो रहा है, ये दिस इज समथिंग विच इज ऑन द नेट बट इट्स ऑन द वायरलेस नेट, और ये IVR यूज हो रहा है। ओपन सोर्स का एस्ट्रिक्स प्लेटफॉर्म है, 1.7 पे भी चल रहा है, 11.22 पे भी चल रहा है, 1 से दुनिया की जितनी भी सर्विसेज आपको फोन पे मिल रही है उस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। इंटरनेट रेडियो सोर्स फैब्रिक पे जाओ, इंटरनेट लाइव डायलॉग करो अपनी ऑडियंस के साथ, उर्दू में करो, ना टाइप करो। Creativity is there. You have to find the passion and the opportunity, which is also there. Thank you. Thank you. First, I'll go to further. Just. I'll make it very short. The web was supposed to be this way. इंटरनेट ने इसी तरह होना था, उसके बाद चलने वाली सर्विसेज में डाइवर्सिटी होनी थी, हर चीज में मल्टीलिंगुअल होना था, लेकिन हम लोग उस पर ट्रांजिशन नहीं कर सके क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी अमेरिका से आई। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब अपॉर्चुनिटी सबके पास है। इंटरनेट के अंदर एशिया के अंदर सबसे मेजर लीडर चाइना है, चलो ठीक है आबादी भी है, लेकिन चाइनीज और मैंड्रीन बोलने वाले लोग पूरे एशिया पैसिफिक में फैले हैं। कोरिया की पूरी इकोनॉमी इंटरनेट पे चलती है। जब आप इन सेंसेस को देखते हो ना, तो यू हैव टू रियलाइज द इंटरनेट इज इनोवेटिव, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। यूनिलैटरलिज्म अमेरिका का खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो वो नहीं छोड़ रहा, तो लोग उसको ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो ब्रेकअप मॉडल है, इसके खिलाफ इंजंक्शंस भी होंगी, इसके खिलाफ बिल्स भी जमा होंगे यूएस कांग्रेस के अंदर, इसके खिलाफ यूएस कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलेंगे, लेकिन इट्स गोइंग थ्रू, इट्स we'll try. Can we do this? To talk to you about this later on, right? Thank you so much. Acha, I want to keep it interactive. Everybody will have a chance to speak, and we have a lot of ideas to share, but I want to get more audience involvement. Please go microphone there, please. Apna naam, organization, your blog, and a question, please, not a comment. Assalamualaikum. Muhammad Salman, I'm from Kodak. I'm an engineer. Last month I was in Shanghai, और मुझे वहाँ पर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना होता था, कुछ भी खाना था या किसी भी अपने कॉलीग से जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे कुछ पूछना था, दे डोंट नो इंग्लिश, और वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड आई हैव सीन कि वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो चाइनीज में टाइप करते हैं एंड इट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इवन वो चैट कर रहे हैं और एमएसएन खोला हुआ है, नीचे छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो अपनी चाइनीज में टाइप करते हैं और वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो व्हाई वी आर कंफ्यूजिंग इंग्लिश एंड उर्दू? व्हाई नॉट बोथ? वी मस्ट यूज two variants of every website, English and Urdu, and we must use both in MSN, in Google, AdSense, everywhere. Why not? The podcasts we produce on our blogs or generally on our websites, it's significantly lowered to pretty much everyone else. तो यदि बुनियादी तौर पे क्रिएटिविटी हम करते रहेंगे, इनोवेशन आती रहेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर टाइम भी हम लोग कम से कम पॉडकास्ट पे तो आते हैं ना। ये यूट्यूब के ऊपर देखिए, कराची में होता है, एंड मैं ये बात कैटेगोरिकली करना नहीं चाह रहा था पहले भी, देखिए लाहौर और इस्लामाबाद अभी भी ब्लॉगिंग के लिहाज से या सोशल मीडिया के लिहाज से हम लोग काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू कराची। कराची बहुत पहले शुरू हुआ था, कराची का स्टेटस बहुत बेहतर है, इसमें उनके पास मैन पावर काफी ज्यादा है, काफी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, बट दे हैव डन अ लॉट मोर देन वी हैव, वी आर कैचिंग अप। बट वंस वी आर गोइंग टू डू इट एंड वी आर गोइंग टू डू इट आवर वे ऑन आवर पेस, उसमें पॉडकास्टिंग इज समथिंग वी हैवंट इवन टच्ड येट। यूट्यूब के ऊपर आप 20 या 10 मिनट्स के जो शॉर्ट प्रोग्राम्स होती हैं, प्रोग्राम की अपना कमेंट जो आपने एक कॉलम लिखना था उर्दू के अंदर, ठीक है, अगर उर्दू नहीं लिखी जाती कोई मसला नहीं है, हम उसको हम एक दफा टेप करके एटलीस्ट यूट्यूब पे तो रख सकते हैं, वी कैन ऑलवेज लिंक इट इनटू आवर वेबसाइट, ठीक है ना। सो वी हैव दीज ऑप्शंस, और उसमें हाँ ये मैं मानता हूँ और ये हम सारे तकरीबन मानते हैं कि वी हैवंट exploited these resources the way they should have, but then again we're starting out, अभी जाके तो हम लोग इसको सीरियसली टेकअप करना शुरू हो गए।
Great. Let's. वीडियो रिकॉर्ड करता है अगर आप उसका कॉपी तो आई थिंक दैट विल ब्रिंग इन द ट्रांसपेरेंसी और वो थोड़ा सा गुड गवर्नेंस की तरफ लोग आएंगे. Great. I would like to open up to more questions. We'll all have a chance to. हमने पाकिस्तान के जो लिरिक्स है, we've taught in Urdu. YouTube के ऊपर लिरिक्स उर्दू लिखे हैं, you learn lyrics in Urdu. Community है. That's fantastic. We have time for. Economic policy. Because basically from my experience, we've been all talking about, the issue of language and whether there is sufficient demand and the supply. The experience I've seen basically, from my business, is that we're all pushing individuals and basically the student population towards English. You see all this marketing piles. You have English as a prerequisite for university and college and even CSS, as Muhammad Khan mentioned. So basically my question is, what do you see in terms from public policy and from the government in this perspective in changing students' affiliations towards Urdu language? देखिए, मेरे माँ बाप है ना, मुझसे पहली बात इंग्लिश में की. I call my parents mommy and daddy. Right, and that goes even worse with the rest of the family. उसके बाद मेरे मामा ने मुझे उठा के अमेरिकन स्कूल में डाला, क्योंकि वो लेबर क्लास जनरेशन थी. वो 1970-60s के ऑयल रश के अंदर पाया गई थी. हम उनकी वो जनरेशन है जिसको जनरेशन में पाया गया, पंजाबी में कहते हैं ना टपाना. That's the generation we are, right? जिसको हम ABCD कह देते हैं, American Conference use this. But look at the brighter side of things. एक जो ट्रांजिशन जो आप कह रहे हो, राइट, वो हो रहा है, वो नीड बेस्ड. ठीक है. दूसरी चीज मसला यहाँ पे वही आ गया कि हमने एक नॉर्म बना दी है. ये नॉर्म सोसाइटी के सिर्फ 14% लोग शेयर करते हैं, बाकी अवाम इससे एलियन है. जो बंदा गांव से जाता है ना बाहर, जब वो वापस आता है तो उसकी भी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी वो अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है वहां किसी को समझते हैं. राइट, दिस आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइजेशन. The net is going to force you to come back to it. It's going to start because your content, local content, like others said, does not hold monetary value because you don't understand your own networks. You have 1,200 blogs in Urdu. You can cycle content on each other, right? Munis can come in and put a job advertisement across that network. Do you know how much revenue that is going to generate? We mapped nearly 6,500 blogs. The last Berkeley Harvard research was in Pakistan. 6,500 blogs we have this year. ठीक है? 6,500 के ऊपर पूरा आर्टिकल आया हुआ ग्लोबल वर्सेस में पढ़िएगा. पूरे पाकिस्तान में हार्वर्ड की टीम आगे एनालिसिस करके गई है पिछले साल. We're not producing anything new. और वो भी ये कह रहे हैं कि इनोवेशन, चाहे कंटेंट इनोवेशन हो, चाहे सोशल इनोवेशन हो, वो आपकी लोकल लैंग्वेज में. तो ये वही बात आ गई कि उंगलियां उठाना बंद करते हैं, ये देखते हैं, सर्वे करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें सोल्यूशन फाइंड करते हैं. फरहान मसूद का मैं जिक्र इसलिए किया था, फरहान ने मुझे एक मशीन दिखाई जिसके ऊपर इंटरफेस पे ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी, तस्वीरें बनी हुई थी. और वो फैक्ट्रीज पे लगाता है सुबह ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम के लिए कि लोग आके अपने थंब इम्प्रिंट से या उस तस्वीर को क्लिक करके फैक्ट्री में एंटर हो सके. दैट सेंस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट्स शिफ्ट फ्रॉम द फॉन्ट, लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. So the spam rate is pretty high in Pakistan. But don't you think it's unfair to block all the AdSense users in Pakistan rather than the specific who are spamming? Because not everyone is spamming. Obviously, सारे बंद हुए हैं, बहुत सारे खुले हुए हैं. किसी को खुला है? I'm also a student. I have recently conducted research on this phenomenon of blogging versus journalism and stuff. And I want to ask the question that what is your editorial policy as regarding to blogging? Is there any, and if not, then what do you think? If there should be any blogging policy for bloggers, there should be some ethics and rules for bloggers also that they should comply to. And also tell me, how much pressure do you have from your owners, like in your case, Yamin Hamoud or Mr. Shakil Rahman and others? What do they think about blogs and how much they influence the bloggers who are writing for their organization? मैं चाहता हूँ कि इस सवाल के जवाब में ऑप्शन होते हुए हम पास मैं इसका जवाब देने की कोशिश
मुनासिब पॉलिसी है और उसकी बड़ी आसान सी तोसीफ ये है कि जिस तरीके से जितनी रफ्तार से हमारे मुल्क में और हालात और वाक़यात तब्दील होते हैं, सियासी मौक़िफ़ियत तब्दील होती है, ये बहुत दुश्वार है कि आप एक वाज़ेह पॉलिसी, बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी रखें और उस पर अमल करें। बार बार कोशिश ये जरूर की जाती है कि कुछ गाइडलाइंस खासतौर से यूथ के हवाले से और को अमल दामन करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। मैं इससे बेहतर जवाब को भी नहीं हम लोग एक एंड पे पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग शुरू में एंड मिस्टेक्स होंगी, गलतियां भी हम लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा करनी है, बट लेट्स सीरियसली टेक इट अप एज समथिंग दैट कैन बी मोनेटाइज्ड इन लॉन्ग रन, क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई वुड। काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो तमाम लोग सोशल मीडिया पर और ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, यकीन रखें कि आप लोगों ने एक बहुत मुस्बत कदम उठाया है और आगे चल के इससे बेहतर होगा। सिर्फ आपने जो जिस स्पीड से काम कर रहे हैं आपको बेहतर करनी है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी हो जाएगी। पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जिनमें से ब्लॉग अवार्ड्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, गूगल का पाकिस्तान पे होना ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप लोगों का इस तरह अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना सबसे अच्छी चीज़ है। द बिगेस्ट आउटलेट वी हैव एट द मोमेंट इज द इंटरनेट। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में मेरी ज़ात के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि तब मैं अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कहता हूँ चेंज लाने की बहुत अपॉर्चुनिटी और आपके हाथों के अंदर है, ठीक है, आपके वॉइस के अंदर है, आपके विजुअल्स के अंदर है। बिलीव इन दैट एंड कंटिन्यू ब्लॉगिंग टू द बेस्ट यू कैन। इम्प्रूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस। यू विल हैव टू इम्प्रूव। कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन एज कम्युनिटी। आज अगर आप वर्डप्रेस पे बैठे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ टूल्स यूज कर रहे हैं, अगर इनको डेवलप करने वाले ना होते तो शायद ये वाला भी एक से फेल ना एग्जिस्ट करे। तो लिहाजा ऑलवेज कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। जिस पर बात हुई थी कि वर्डप्रेस के उर्दू के जो .pod फाइल्स होती हैं वो अवेलेबल है, इसी तरह टूपल के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ जुमला में अवेलेबल। दिस इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द पाकिस्तानी कम्युनिटी। वी हैव टू लुक आफ्टर ourselves. तो लिहाजा कीप कंट्रीब्यूटिंग, कीप कम्युनिकेटिंग, एंड आई थिंक that these are the platforms जहाँ पे अगर आपको ग्रुप अप हो तो हम लोग ऐसे सोल्यूशंस जो कि उर्दू के प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे ये आपके ब्लॉगिंग और रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स हो गए, इनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और इनके ऊपर हल ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच। First of all, thank you for coming. All बड़ा लग रहा है तो उसका लेकिन the point is ये इन्होंने जो बात की that's exactly the message I think that we should all learn कि इंटरनेट का जो इंटरनेट है itself वो ज़माने वो भी हैं, हर किस्म के काम होते हैं उस पर, बट इसमें एक बहुत कमाल की ट्रांसपेरेंसी है इंटरनेट में, नंबर वन, और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपको कोई ये नहीं, आपके वालिदैन के कोई आपकी सीवी नहीं देख रहा, आपका कोई पावा नहीं चल रहा ऑनलाइन, आपका बहुत बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, और दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी सिटिंग एनीवेयर, गुजरांवाला कहीं भी किसी भी शहर में बैठा है, उसको सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस अगर मिलती है तो लिटरली दुनिया पूरी खुल जाती है। कोई बहाना नहीं रहता आपके पास कि आपको फलां चीज नहीं पता थी, फलां कैसे करूंगा, एवरीथिंग इज देयर। ये मतलब आई एम लिविंग प्रूफ, आई कैन चैलेंज, मतलब ओपन चैलेंज है कि यू कैन लर्न एवरीथिंग ओवर देयर, देयर इज नो एक्सक्यूज। तो वी शुड सी दिस एज द अपॉर्चुनिटी दैट इट इज, एंड द वर्ल्ड इज देयर। पाकिस्तान को आप कहीं भी अपने आप को कहीं भी इस सिर्फ एक मीडियम से कहाँ ले जा सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you very much. From hearing the concluding statements of all the panelists and the wonderful views, दो चीजें जो हैं I would just like to highlight again. And एक जो point है वो ये है कि opportunity, बेतहाशा opportunity है. दूसरा जो point है that is कि अगर हम नहीं करेंगे खुद, nobody else will do it. If Pakistan blogosphere is to evolve, हम लोगों ने ही करना है और नहीं कोई करेगा. As an entrepreneur, I'm seeing tremendous opportunities. After hearing the panelists, I'm very excited. And if any of you are entrepreneurs,
There are huge opportunities to create impact and value and also create something financially interesting. Everybody was talking about it. I pressed the button of Urdu language and everybody got fired up. It was a hot topic. And there's tremendous need. The fact that we're so passionate about it and the fact that everybody's agreeing is some level of awareness as well as the technology is needed to create mass adoption and there's a market for it. So I urge all of the entrepreneurs in the audience, focus on this. There's tremendous impact that can be made from that. Dusri jo baat hai, from a marketplace advertising, the content in Pakistan is not rewarded at the level it is internationally from a monetization perspective, and that's slowing us down. That's all there is to it. It's slowing us down. Jitna zyada platform evolve hoga, from Google's doing a good job, but we need to create indigenous solutions. For example, for Urdu, to match advertisers with the content you're creating. I can afford to hire an advertising sales team. Maybe you can't. But maybe the entrepreneurs of you can get 30 of you together and say, together, let's hire an advertising salesperson. And all of you can enjoy all the benefits. With the Hasha opportunities, I'd like to thank you very much. I'd like to thank all the panelists. A round of applause, please, for everybody. And prior to us leaving, I think there are some announcements that need to be made, so I'll hand it over to Shafaq. Thank you so much, Monisa. We actually had a couple of awards to give out since a few people walked in. Merit Award Urdu blogger, Park.net is here, if I'm not wrong. Monisa, if you could please give this to them. या नहीं पूछा गया तो आपने क्यों ही करता तब शो डाले ना और उसके अंदर यदि वन ऑफ द ग्रोइंग एग्जांपल जो आपके पास एग्जिस्टिंग है छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट ऑफ कर लेते हैं द सोर्ट ऑफ गैस क्राइसिस यू आर फेसिंग राइट नाउ इफ यू लुक क्लोजली दिस गैस क्राइसिस डिड नॉट स्प्रिंग अप ओवरनाइट ये किसी बुनियाद पे आया है जहां तक पहुंचे हैं ये एक इवेंचुअलिटी है ये स्टार्ट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि हम स्टार्ट कहां से हुए और क्यों हुए अगर आप उस पॉइंट पे वापस जाते हैं तो दैट वाज बेसिकली अ पॉलिसी डिसीजन इनिशियली दैट हैज रिजल्टेड इनटू दिस डिजास्टर वी आर फेसिंग राइट नाउ दैट प्राइमरीली मीन्स कि जो पॉलिसी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है अगर वहां पे स्टेक होल्डर से या जो जिन लोगों की जिंदगियां उसने इफेक्ट करनी है अगर हम उनसे ओपिनियन नहीं लेंगे तो वो पॉलिसी आके सबको तंग करेगी इफेक्टिवली स्पीकिंग ये हो गया सो पब्लिक पॉलिसी एक प्रोसेस का नाम है बुनियादी ठीक है पब्लिक पॉलिसी के अंदर बनाते हुए पब्लिक पॉलिसी पहली बात है बहुत लोगों की गलतफहमी होती है लेट मी क्लियर दिस आउट स्टार्टिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी बहुत लोगों की गलतफहमी होती है शायद पॉलिटिशियंस बनाते हैं पब्लिक पॉलिसी में पॉलिटिशियंस का कोई काम नहीं पब्लिक पॉलिसी इज नॉर्मली इंटायरली मेड बाय ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ठीक है जिनको हम लोग आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं सो ऑन सो फोर्थ दे मेक द पॉलिसी इटसेल्फ योर पॉलिटिशियंस लेजिस्लेट दैट पॉलिसी and once that policy has been legislated upon that is implemented again by the technocrats and the bureaucrats so ये एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है कि जिसके अंदर आप शुरू होते हैं ब्यूरोक्रेट से ये जाती है लेजिस्लेचर के अंदर जहां से ये लेजिस्लेट होती है और ये फिर वापस आ जाती है ब्यूरोक्रेट्स के पास या टेक्नोक्रेट्स के पास इंप्लीमेंट होने के लिए ठीक है ये लेजिस्लेट हो गया सॉरी मेरी लगे काफी और ये आपकी फॉर्मुलेशन इसको हम लोग कहते होते हैं स्टेज को फॉर्मुलेशन नाउ थिंग इज योर सोशल मीडिया या आपका चीखना चिल्लाना या जो हम कहते हैं कि हमारी यूथ को चांसेस मिलने चाहिए विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट वंस इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड या वो इम्प्लीमेंटेशन के फेज में चली गई इट विल हैव एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर चीखें चिल्लाएं रोएं पीटें जो करना करें वो लेजिस्लेट हो जाती है इट मींस नथिंग टू एनीबॉडी बट द प्रॉब्लम इज कि जहां पे हमारा पास सबसे ज्यादा जो अपना इश्यूज क्रिएट होते हैं वो इस पॉइंट पे जाके हमारे पास आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर 90% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि लेजिस्लेचर होता क्या और लेजिस्लेशन करती क्या है ठीक है लॉज बनाते हैं बिल होता है वो बिल लॉ बन जाता है वो लॉ आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप यहाँ भी चीखें चिंगाड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
regardless of who you are, unless you are an MNA or MBA, जो बोल सकता है आपके पास you have no right as a general public to have an impact on your public policy. This, on the other hand, the formulation phase, this is where your new media space, या जो आपका न्यू मीडिया इन जनरल है, आपके चीखने चिल्लाने का इफेक्टिवली फर्क पड़ सकता है जब वो चीज फॉर्मुलेट हो रही है। ये वही बात है कि अगर ब्रिज बन रहा है ना, तो जब वो बन जाएगा उसको कहना कि ये टेढ़ा बना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो ब्रिज बन रहा था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसके आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा था, हाँ, तब कहना कि ये टेढ़ा बन रहा है तब फर्क पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ पहले ये हम लोग क्लियर कर लें कि जब हम लोग न्यू मीडिया स्पेसेस की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पब्लिक पॉलिसी, हम किस पॉइंट के ऊपर उसको इंटरवीन करने की बात करें। एंड दैट पॉइंट इज द फॉर्मुलेशन पॉइंट, जहां पे आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करने जाते हैं ना। इस पॉइंट के ऊपर ट्रेडिशनली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर छोड़े पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि पॉलिसी हवा में से क्रिएट नहीं होती। पॉलिसी के लिए लोगों से इंटरव्यूज किए जाते हैं, मिला जाता है, बात की जाती है, डिस्कशन होती हैं। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जाके एक कॉमन सेट ऑफ आइडियाज के ऊपर पहुंचते हैं, जहां पे फिर उसको लफ्जों में लिखा जाता है और एक पेपर तैयार होता है जो कि इनिशियली आप जिसको हम ब्रीफ कहते हैं या फ्रेमवर्क कहते हैं। वो ब्रीफ या फ्रेमवर्क बन के उसको पब्लिक डोमेन में फेंका जाता है, उसको कोई महीना पीरियड पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उसके बाद उसको वहां से निकाल के एज इट इज कर दिया जाता है। द प्रॉब्लम वी हैव बीन फेसिंग सो फार एज अ नेशन फॉर 64 इयर्स इज कि जब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका पब्लिक डोमेन में आता है ना, किसी बंदे को ये नहीं पता होता जो आपके मासेस हैं कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया कहां पे है। You genuinely do not know कि where that document is. गवर्नमेंट अपनी तरफ से या जो उसको बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो पब्लिक के सामने वो चीज रखी क्योंकि दिस इज द वे इट इज डन। अब वो पढ़ा कहाँ है वो किसी को नहीं पता, उसका फीडबैक किस तरह आना है वो भी आपको नहीं पता। दिस इज वेयर द न्यू मीडिया और या ब्लॉगिंग या ट्विटर या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट कम्स इनटू प्ले। दिस the policy document itself and the formulation phase, this is what we are aiming to address and this is what we are aiming to target through new media and social media networks. अब उसमें हम लोगों के लिए ये क्यों एक इशू बन चुका है कि ये हम लोग इस बात के ऊपर जाके देखें, क्योंकि for 64 years we have been trying over here. Think of it as a very simple option. आप चीजें मारते हैं at this point, चीजें मारनी चाहिए at this point. And for 64 years, we have somehow managed to remain at this point. इसी के ऊपर आगे होना पड़ना होता है, nothing gets done. Hence the conclusion कि 64 साल गुजर गए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया and we haven't achieved anything. But now social media has significantly played a part in addressing the issue at the very first stage where the policy document or the policy framework has just been written or has just been developed. At this point of time, जो आपकी जो blogs हैं या जो आप लोगों के ट्विटर मैसेजेस भी हैं, जो आपकी इवन फेसबुक ओपिनियन भी आपने देखा होगा, डिफरेंट अखबार आते हैं, वो आपसे नॉर्मली रेगुलरली पोल्स लेते हैं या यूगव के पोल्स आते हैं, बहुत रेगुलरली आते हैं। आप उनको एक दफा क्लिक करके छोड़ देते हैं। व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि वो जो आपकी ओपिनियंस होती है ना, दैट फीड इनटू दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपकी जिंदगियों के जो फैसले होते हैं ना, जो सो कॉल्ड हमारी आवाम को बहुत दफा नहीं समझाया जाता, आपकी जिंदगियों के फैसले इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर होते हैं और ये आपको पता भी नहीं लगता, आपकी ओपिनियंस इसमें फैक्टरिंग की जा चुकी होती हैं। सोशल मीडिया gives you the chance to actually play a very active and very vocal role in getting your opinion heard over there. जो हमारे पास लास्ट इशू था, which I would make an example out of, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता, the government of Sweden actually handed over the Twitter account of Sweden to the people of Sweden. That happened about I think so a week ago or something like that. They handed it over to the people of Sweden. Now that might sound extremely funny and that might sound fairly comical कि अच्छा बड़ा इन लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट किया, which is very fun. The point is, the people of Sweden can keep asking their governments कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, what about this, what about that. That leads the government to take up issues that they will never normally pick up and argue upon or talk about. इसके अलावा आप देख लें जो
policy when Balochistan was made, it was implemented, and no one objected to that policy when it was being made. No one objected when it was being legislated. No one mentioned it when it was being implemented. अब आपके पास 3 साल गुजरने के बाद हर बंदा चीजें माना है कि बलोचिस्तान के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं. The difference is जब बलोचिस्तान की अगली पॉलिसी बन रही है तो ये पिछले 3 साल की ब्लॉगिंग या 3 साल की ओपिनियंस या 3 साल का आपका सोशल मीडिया का क्रक्स आ रहा है और उसका जो इनपुट आ रहा है, that is forcing the government to take back the whole policy now and rethink their stance. Same with the economic policy जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाया कि आप लोग कर क्या रहे हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अस कि ये हो किस तरह रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू डू दैट. द गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इनटू अकाउंट नाउ. अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि द गवर्नमेंट इज ऑल नोइंग एंड द पीपल हु आर रनिंग, so social media is letting you talk to people like Dr. Nadeem Khan. He is very active for some godforsaken reason and he listens. And he is a man who is willing to take on his detractors. So is the case with a lot of other people as well. आपने देखा होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के जो कि आगे पीछे रैंडम किस्म के फैसले लेते हैं, but even he has realized the sense कि जी अगर मुझे यहाँ कोई काम करना है and if I want to connect with people and I want to understand what their problems are, might as well ask the people directly what their problems are. अभी तक हमारे पास मसला जो आ रहा था वो यही आ रहा था कि लोगों से ये तो पूछ लें कि आप कर क्या रहे हो उनके लिए. एक इलाके में सड़क बना देना प्रॉब्ली इज नॉट द बेस्ट केस. उस इलाके में शायद गैस देना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है या उस इलाके में बिजली देना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है. These are decisions that you have to take. Because you have limited resources and you have unlimited ones. You can't give everybody, everything at all the time. You need to give people what they have and what you can provide to them. At that point of time, that is where the social media comes in and that is where your opinions matter and they count. So that is basically समझने की जो बड़ी बेसिक सी बात है जो हमारा क्रैक्स है जिसमें हम लोग खड़े हैं वो हो गया. Now at this point of time, I would like to actually have a chat with you and like to have a discussion with you on आपके पब्लिक पॉलिसी के लिहाज से आप लोगों के जो सवाल हैं ये जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है. And I keep asking this question over and over again. Why don't people think that their voices are heard, even though they're clearly heard? I sat on the other side of this policy making issue. I've worked on 3 national policies. We ask people, no one replies. ट्रेड पॉलिसी बनती है, मैं ट्रेड पॉलिसी का अपना गवाह हूँ. हम लोगों के पास खुद चल के गए, सोशल मीडिया को आप छोड़े, हम लोगों के पास चल के गए, 1,500 इंटरव्यू किया, कोई करने को तैयार नहीं. इंटरव्यू करने को तैयार, बोलने को तैयार नहीं था. बट वंस द ट्रेड पॉलिसी कम्स आउट, द नेक्स्ट डे यू हैव 15 पीपल क्राइम ब्लडी मर्डर कि हमारे साथ ज्यादती होगी, हम लोग लुट गए, हमारी इंडस्ट्री खराब होगी. एंड आफ्टर माय डज दिस बाय द मोस्ट ऑफ. So the point is कि जब आपके पास एक स्ट्रक्चर है, you know these things are in the public domain और अब तो काफी क्लियर हो गए हैं. What are the problems? What are the issues at least you see within this setup? And how is this setup not working out? Because this is working out everywhere else in the world. पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है. How the hell is it possible कि हमारे पास एक चीज काम नहीं करती बट हर जगह काम करने को तैयार है? What has been our problem? New media is playing a part. It's playing a very big part. But then again, in your opinions, what do you think is the problem here? Hi, my name is Zainab Nagar. I'm a training consultant by profession and I'm a 3rd-year law student. I've read the marketing strategy. I don't know how many of you know that, but President Obama mostly won his election through Facebook. Yeah. He got to the youth through his policy of change, and he got through people through Facebook. So it works, and I believe that it works. But people don't know that. I don't know what 3 policies were discussed with people and were made with their opinion. I don't know how to share my opinion. That information is not with the general people. See, again, that's the thing. You're very right. That information is not with the general people. That is what the government what the country keeps complaining. But on the other side, the government keeps complaining at the same time is every other policy cannot be made into a bill unless the people of Pakistan have had their say on that. It has to be given out into the public domain for at least a period of 30 days. So it is out there and where is it? How do I find out? See, exactly. That's the question we need to be asking for. How do we find out? First of all, the Planning Commission of Pakistan, to be honest, is a very good place to start out on anything.
State Bank of Pakistan is another great place to be starting out on anything you want to know about Pakistan. Economic Affairs Division is another place you need to be looking at. Because these are places which do most of your thinking for you, and these are the places who basically decide how you live your life for the next 10 years. And the problem is most people don't know that these places exist and what they do exactly. But yeah, you're right. President Obama won on Facebook. On Facebook. But at the same time, the policies that are being made even in Pakistan, they're out there. Like, I'm sorry, but Shahbaz Sharif is doing a great job at it. He has his Facebook and it's very active. He's doing a great job, yeah. Okay, my only concern is, okay, we talk about new media and we've seen, of course, like the Egyptian revolution was all because of Twitter and, you know, how different countries have used social media to get their word out. But don't you think it's very restricted to like a particular portion of our society? Because not everyone is on Twitter, not everyone is on Facebook, not everyone even has access to internet. Because, I mean, it's easy for us to say this, but public policy, I think it affects masses who cannot even reach out to that level. So then how are we using new media space in that case? Okay. That is a very general question, and that is a question we hear quite a lot, to be very honest with you. Yes, we have a very limited amount of people on the internet. But once you talk about new media spaces, you don't limit yourself to internet. You have to look beyond. You have to look at the telecom companies. The amount of reach that the telecos have across Pakistan is actually better than pretty much any channel or newspaper or anyone else in this country. In northern areas where there's absolutely nothing and you don't get electricity, you have a phone, you will get signals there. So, it plays a part. Coming on to the second part of the question, the thing is, there are programs which have been working on. Yes, we don't have 100% internet literacy in Pakistan. Yes, we don't have everyone in Pakistan on the internet, but at the same time, there are different tools that are being used. And yes, the problem with those tools is that they're not very well advertised or told about people. One of the biggest ones is the Basic Income Support Program. I'm sorry, but a lot of people criticize the Basic Income Support Program on multiple issues. I've done evaluations for the ASP program. Okay? I've ran the program in northern Pakistan. It is by far the most technologically enhanced program in Pakistan right now. Women who've never used mobile phones in their lives get money through their mobile phones. So yeah, you have social media, and they reply, they get an SMS, a very simple SMS at the end of the day. It's like, were you satisfied with your service? Yes, no, which is fairly easy. You press yes or you press no. And questions like, do you think A, B, C, D, or E would improve this service? They press one button and you get instant feedback, so the government knows. The government has been improving that system over a period of time. Within the last 3 to 4 years again. Then there are other programs. Say, for example, in Sindh, there's something called the Sindh Rural Support Organization that runs a massive program in Sindh. And then there's another organization called the Bacha Khan Rural Support Program that runs a massive program in Khyber Pakhtunkhwa, all integrated with technology beyond your imagination or the imagination of the common people in living in big cities. Yes, living in big cities, we assume rural areas to be areas where there's nothing and there's nobody. But I kid you not on this, go out there and see the rural areas, the amount of policy decisions that are made at that point of time, where they talk to their politicians or where they provide feedback through telecommunications. It's huge and it plays a part. The problem is, the problem, I go back to the original problem, the problem is we keep crying here. This is the part where we keep raising our voices. The problem is we need to be raising our voices here. The issue. My point here that you're saying that at the first step we should be raising our voices at the first step. But the problem, like she said, this defect in the marketing strategy of the government. Like, we don't know where those documents. If you're saying that it's on the website of State Bank of Pakistan, no one told us. You are telling us now. It should be advertised effectively so that the whole blogosphere should know within days that this is a document. For those policies that have been made, I don't know what policies they were, and I don't know how I could have put in my opinion during formulation. Yeah, exactly. But the problem is, the outreach as far as the government of Pakistan is concerned is pretty pathetic. There are no qualms about that. And yes, it's being worked on. I cannot give you all the solutions for the problems, but what I can tell you is this is the starting point. If you actually genuinely want to
have some impact on your policy. Start at this point. If you can never go sit with the Secretary of Commerce and you cannot sit with the Secretary of Investment. But what you can do is make enough noise about them in the social media, and I kid you not, they actually listen because they're very self-conscious people. If someone is calling them bad, they want to know who's calling them bad and why are they calling them bad. तो वो है, हाँ, ये गवर्नमेंट का आउटरीच का एक बहुत जेन्युइन मसला है. इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट से काम नहीं हो रहा. वेरी ऑनेस्ट. वजह यह है कि गवर्नमेंट अभी तक इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. गवर्नमेंट अभी तक मीडिया को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है, तो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार होने में तो गवर्नमेंट को भी साल पड़ेगा ना. तो बट दिस इज, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पॉलिसी प्रोसेस है, उसमें दिस इज द प्लेस टू स्टार्ट. अब गैस का क्राइसिस है, 10 साल पहले की पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, अब जाके हमें लग रही है, तो 10 साल पहले का शोर आप क्यों डाल रहे हो भाई? 10 साल पहले का जाके डालो ना. सर एक आप ले लें. And also, I'll talk from the viewpoint of government or the government's departments or different organizations. And I'll give a very extreme example. You're from planning commission, or I don't work for the government. But no way would I ever work for the government. You just make the policies for government. I'm an independent consultant. Okay. I work for the obvious thing. Okay, but for the audience here as well, I'll just give an extreme example. If you imagine a government department, वहाँ पे तस्ने वाली फाइल चलती है. So in that situation, you are talking about new media space, and where the CEO, who is heading the organization, doesn't even know or he doesn't want to know his email, right? So there are capacity issues. Plus, since the time is short, how much does it cost, or what does it cost for the government or for a government organization to place itself on the new social media, or connect with the people while the policies are being made and while the policies are being made. एक बार आपको मैं क्लियर करके बता दूं. The biggest misconception is कि हमारे जो secretaries हैं, जो government officials और the technocrats don't read their emails. They don't. No, I am a witness to that. They don't. मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं क्योंकि मैं 4 दफा witness. My CEO doesn't. उसका तरीकाकार नॉर्मली ये होता है कि वो ईमेल प्रिंट की जाती है, वो पेपर पे आती है, पहले वो असिस्टेंट पढ़ता है, वो असिस्टेंट पढ़ के फिर साहब को समरी सुनाता है, वो समरी सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई हो रहा है तो फिर मैंने दसी. वो जब 6-7 आ जाती हैं, फिर साहब कहते हैं ओहो ये तो मसला है. वो नीचे से एक बच्चे को बुलाते हैं जिसको अंग्रेजी आती होती है, वो फिर उनसे पूछते हैं कि हाँ इसका करना क्या है, फिर वो कुछ करता है. यस, कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं. वही बात है ना. देखिए आपने जो इश्यूज क्रिएट किए हैं ना, they haven't been created overnight. These were created over long periods, 20-30 years के अंदर जाके प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं और हमारे पास आए हैं. The problem is how do we deal with them now? सोशल मीडिया के ऊपर जाते हुए गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं होता. The only problem is वही बात है, देखें गवर्नमेंट को आती नहीं है, गवर्नमेंट को कैपेसिटी उनको आती नहीं है, सिरे से नहीं आती है. और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आप किसी भी ढंग के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएं और लोगों से सवाल करें कि आप CSS क्यों नहीं देते हैं, उनके जवाब सुनाएं. I ask this question to a lot of people. आप CSS क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में आ जाए, आपको क्या तकलीफ है? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में आ जाए, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. कोई भी नहीं आता. You ended up making the CSS or the civil services of Pakistan into an organization which is bottom of the pit. They're the bottom feeders. They don't get the top talent. They don't even get the midway talent. They get the leftovers from everywhere. And how do you expect them to run something when they're the leftovers from everything? कौन सी मिडिल क्लास फैमिली है जो अपने बच्चे को कहेगी तू यूं कर, तू CSS कर? So the constraints are there, and even so these you have to be technology savvy. For example, there are people who are good at such things. I'll tell you a case जो कि खुदा के समय देखे परेशान हो गया. The DCO and brigade commander and the DIG of Swat. जब ये जंग खत्म हुई है ना, they talk to each other on Google Talk. Okay. वो पूरा सवाल और मालापन ठीक ठाक बढ़ा नहीं है, चित्राल तक जाता है. सारे का सारा गूगल डॉक पे बैठ के इकट्ठे डिस्कस करते हैं क्योंकि वो वहाँ फोन चलना मसला है, बिजली आती रहती है. कंप्यूटर उन लोगों ने UPS पे लगाए हैं, एक दूसरे से G-Talk पे बात करते हैं कि दफ्तर से बाहर ना निकलना पड़े सिक्योरिटी के मसले.
देखिए तो मजबूरी की वजह से. But it's a creative way. आप उनको email कर दें. There's a standing order. If you email one of those guys and you don't get a reply within 25 minutes, वो बंदा आपको पर्सनली फोन करके apologize करेगा कि जी सॉरी आपकी email आई थी मैं जरा बिजी था माफ कर दें. तो yes, बंदे अच्छे लेके आएंगे. Your attitudes will change. There is a change coming. Emails के ऊपर या आपके social media, they write blogs by the way. They read blogs. ये बहुत बड़ी गलतफहमी और लोगों की है कि ब्लॉग ही पढ़ते हैं. अखबार भी पढ़ते हैं, ब्लॉग भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं. पब्लिकली बोल नहीं सकते क्योंकि फिर बुरा लगता है. उन लोगों को बुरा लगता है कि अगर हम लोगों को हर तरह से गालियां मिली हैं तो इट इज मच इजियर टू डिनाई द फैक्ट दैट वी इवन नो कि दिस इज हैपनिंग. इट्स मच इजियर नो. सेल्फ प्रिजर्वेशन की चीज होती है. तो उसके हाँ आपकी बुनियाद की बात करें आप 100% आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. बट कोई बात ना समझने की कोशिश करें लिमिटेशंस to the problems we have right now. So go ahead. I'd just like to add something to what our colleague was saying. Basically, I'm in the field of education, so we were reviewing the scenario in Finland. Now, the situation over there is that the top talent in terms of education is recruited for primary education. There is no teacher less than PhD at that level. So similarly to government, हमारा भी जो talent बॉटम है, आई थिंक वो आप जो बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सीएसएस में जा रहा है. बट आई थिंक यू वर डिस्कसिंग कि जी आप फॉर्मुलेशन स्टेज पे हाईलाइट कर सकते हैं. मगर आई थिंक कि इशू लेजिस्लेचर साइड पे भी है क्योंकि आप देखें कि अटेंडेंस आपकी लेकिन बिल पास जो आपकी लेजिस्लेशन है बिल पास होने में 10 मिनट लगेगा. वो कोई टेंशन नहीं कि अटेंडेंस जारी नहीं. जब करानी होती है ना गवर्नमेंट अटेंडेंस वो गवर्नमेंट अटेंडेंस दी जाती है. वो बच्चे आ रहे थे चोरी पूरा होता है सब कुछ. तो प्रॉब्लम इसके लेजिस्लेशन में जो बच्चे बैठे हैं ना, and I can count the people who know what they're talking about on one hand, who are capable enough और उनको पता वो क्या बात कर रहे हैं. In all honesty, you cannot expect our current trade minister to even understand what trade competitive means. ठीक है ना. अमीन फहीम साहब को नहीं पता ट्रेड competitive. अगर मैं आपसे और बताना चाहती हूँ formulation, just one last question. If I want to make noise about formulation now, at that point, how do I do it? Economic growth policy भी डिजाइन हो रही है. फ्रेमवर्क बना है अभी पूरी नहीं हुई है. It's going to be there for the next 10 years की बन रही है. प्लानिंग कमीशन के पास है. डॉक्टर मैं अपना रिमोट आता है मैं आपको लिख देता हूँ. आप शोर डालें. डालें शोर. He will listen. Oh, he will listen. क्योंकि देखें ये वो लोग हैं they are willing to listen. आप कुछ बात बताएंगे they will listen. क्योंकि एक सच्ची बात है there are things you might know better than them. It's that simple. तो इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है. अखबार में लिखें शोर डालेंगे उन्होंने अखबार से ही पढ़ के आपकी बात ही लेनी है. अगर ब्लॉग लिख के करेंगे उन्होंने आप ब्लॉग पढ़ के आपकी बात ही लेनी है. बट एट द सेम टाइम आप कहें तो सही ना. यहाँ तो कोई कहने को तैयार तो हो ना. शुरू तो करें but it will get hurt. But give it time. And you can't expect instantaneous results. That does not happen anywhere in the world, let alone Pakistan. Don't bother with that. It's a false assumption. It will never happen. Be realistic, be happy. That's all I can do. And it does make a difference. But all you have to do is use it at the right point. That's our fault right now. The right point. The inlet. हम लोग से वो मिस हो जाता है and then it's we weak. That's all we do. So you want to know what policy is being made, we go to Planning Commission of Pakistan. You go to Planning Commission of Pakistan, each ministry has its own website, poorly designed, but they have their own website. Education Ministry website is so Education Ministry does not exist. Under the 18th Amendment, that is the Prevention Ministry. Behind making that group was, as far as I remember, back in 2004, we could not find any good photographs of Pakistan, latest photographs, some fresh photographs on Google. We could not find them. Whenever we used to type searching for Pakistan images, we used to find the images that were shot around 10-15 years back by some international foreign photographers, and they were again displaying the same old and tribal areas of Pakistan mainly. That there is no development, there is nothing. So keeping that aspect in mind, and because I myself was very much interested in photography, so we decided to start photography and form a group with the name of Pakistani photographers. So for that, keeping that idea in mind, we formed this group with the name of Pakistani photographers.
It was the first ever online photographic forum platform. The major aim was to invite all the amateurs who are doing photography on their own with their point and shoot. At that time, mobile cameras were not that having good resolution. So at that time, most of the people were either using the point and shoots, and at that time, digital cameras were already coming up in the market. So we planned to have that group and inviting all the photographers who are doing photography to show the world that Pakistan is not as backward as it is being presented on the internet media. So back in May 2005, we formed that group. I can just tell you that within around 3 to 4 months, we have a group of around 60 or 70 people, all amateurs. Nobody was a professional in that. And we had our first exhibition of photographs. And this exhibition was done all on from the internet medium, using that group as a main thing. And we invited photographers from somebody from Karachi, somebody from Singapore, somebody from Islamabad. So in the first exhibition we had 21 members who participated in that exhibition. Everything was done. Everything in that exhibition was done online. From selection of photographs to finally having them, and of course then we 4 of us selected the photographs, displayed them, having the frames done, and then displayed them on in the gallery, then in art gallery. So it was just a first ever interactive thing on the photography scene, and that has a huge impact. It boosted our energies that, okay, this is something that needs to be done on a very serious level. Just wanted to add another thing from the blogging point of view, because for photo blogs you need to have some good platforms that can host your photographs in a good manner, because most of you, if you have uploaded your photographs on Facebook, you must have noticed that there is a change in the photographs resolution that you see on your computer and what you upload them. You will see that, okay, this was not the color that I had on my computer, and now when I have uploaded it on Facebook, the colors are somewhat missing, the quality is not that. So, Facebook is not that a very good medium for hosting that photograph. You need special platforms to host your photograph. Like Dumotex is one of the platforms now to host high quality photographs. Flickr was one of the major sites at that time that was using, that was hosting your photography portfolios at that time. And it is still a very, very large website to host the photographs. So, at that time, one of the very young guys at that time, Ali Khurshid, if somebody has heard his name, Ali Khurshid was a guy who was in Karachi, and he used to capture only the sea view, the sunset at sea view. And mind you, I have never seen such beautiful sunsets in my life. The one he has shot. He was not having any professional camera, any digital camera, he was having a small point and shoot, Nikon point and shoot, and he used to capture the sunsets in his own way. He would capture shadows, he would play with the shadows and just capture the sunsets. Can you imagine in 2005 December, he was one of the persons who was nominated from Times as Person of the Year, Times Person of the Year, because of his excellent photography. And he was interviewed by the Times team, and his interview was published in Time, and his photographs were published in it. And again, the question was, at that time, was that digital photography is making an impact. It's making an impact on that it doesn't matter what camera you are using, is it a high-end camera, is it a point and shoot, or is it a mobile camera now? Because mobile cameras now give you a very good resolution now. Your iPhone, Galaxy, they have a very good resolution now, and you can capture photographs
that really that really capture the moment basically. So the reason why I wanted to tell you about a brief about this was that photography has, we all say that a photograph is worth more than 1,000 words because it teaches you and it tells you a moment, it tells you a whole story in one photograph. So photography is very important as far as blogging is concerned as well. And plus, with the advent of digital cameras and mobile cameras that we have, it is getting very easier now to capture the moments that we all want to. So my workshop, it is a detailed workshop, but I will try to sum up as much as possible in this, how to capture moments and how to take good photographs. You don't need to have a high-end DSLR or a good point and shoot. Just need to focus on few tips. I'm not doing any technical thing in that. I'm just going to briefly tell you about what you can do to make your photographs better. Okay, just theoretical thing that there are approaches in photography, that there are applied photography, there is social photography, there are documentary, there are commercial and fine art. We mainly talk about, when we talk about the blogs, we mainly talk about the documentary and social photography because all of us capture from our mobile phones and then upload it on Facebook and any other websites. Just we document the moments, whether it is an incident, whether it is happening. So we mainly talk about these two things. Okay, this is just how photographs are written, and technique especially need a strong visual sense. Everybody among us have a visual sense, how we perceive. Look, if I'm standing here and I'm taking a photograph of this classroom and somebody else is standing here with me, my angle and his perception of this classroom may be different, and it is of course different because he is perceiving this in a different way and I'm perceiving the photographs in a different way. So I may try to just have this angle of completing the whole photograph in one frame, and he may be just focusing on just few students in that. So again, you need to have a visual sense of what you want to capture actually in that photograph. We are not talking about composition, we are not talking about anything else, but again, this is all okay. Use plain background. A cluttered background against your portrait or your photograph may not appeal to you. So try using a plain background and a busy one. There is a plain background behind that, so the photograph is coming. Okay, this is one thing that I experiment a lot with. That is, when you are in the street and you are photographing people, and you are photographing a movement, if you start posing him or her, the person, then you may not find that movement. And so that is why I follow this. Shoot first and ask questions later. Whoever is going to ask you, who are you, from where you are, and what are you going to do with your photographs, ask all these questions later. Then first of all, capture that moment, and then answer as many photographs as you can. Okay, like if I would have waited for her to pose for me, she was not posing for me. She was just looking at what is this guy doing to me. Otherwise, she would have thrown that glass over me. Now, if I would have waited for him to pose for me, he was coming directly into my camera. So I would have been running with him. Okay. Compose your paintings with film, of course, that is very important. Composition is very important. There's a lot of things that you can do. You can plan your perspective, what you want to show. You can calm down, do the experiments that you don't want to use in that. Add some foreground and colors. And those who know some basic photography tools,
There's a rule of third that is in the end, but I don't think so we will have the time to cover that. Like these are the examples. I have just added, otherwise if it had been a simple program, I just added the foreground interest to have that impact. Okay, moving from the middle. We always try to compose our photographs like we want to capture everything in the middle. So just try moving your subjects from the middle and try to do something else. Like he's not in the middle, but you can see what he's trying to do. Okay, moving close, go a little bit closer. Use your zoom lenses, your cameras, point and shoot and DSLRs, and try to focus the essence of it. Okay, be selective. Add the elements that you want to add actually. Okay, focus. Focus is of course, that is very important. If you are using the DSLR, then you can pre-focus and you can selectively focus the things that you can. I have just focused on the leaves, not in the background. Okay, leave this. You need to know your flash range, how much flash, the power of the flash you have. Okay, this is very important. This is what I watch your light. For a better photograph, if you are shooting outdoors, the rule of thumb is have your sun in the back. If you want a good photograph, have your sun in the back, and you will get a good photograph. Because if the sun is at your back, you will never get a good photograph. This is very essential. And the best light, as far as photography is concerned, we talk about the best light either it is early morning or the late evening, because when the light is directional, it is and that light is called golden light, because that the light is very warm and it gives you a very warm tone. You can see. Okay, watch the weather. You need to watch, if you are shooting architecture or landscape, you need to watch the weather before going and taking the photographs. Okay, this is shot after sunset. This is not in the daytime. This is also shot after Maghrib time. Okay, take some vertical photographs, not only keep the horizontal photographs in mind, have some vertical, because at times vertical photographs, and especially with the portraits, vertical photographs are good. Okay, up to the time you don't involve yourself in the picture, you cannot have a good photograph. So involve as much as possible in the photograph to get the essence of it. You cannot see, but these are the people who are having. I was taking photographs of a lot of people around me, and I was ignoring this guy. So then I pointed my camera towards him. So he said, "Time mil gaya, baki sabse fare ho gaye." So I have captured that moment. Otherwise, it would have been a normal photograph, but I can see that he has a smile on his face, and again, they were looking at me and taking photographs. He was just pointing his towards me that I will fire you if you take more photographs. So I purposely asked him to have a smoke and try to having that, because it is adding an element to his character. Okay, experiment with your compositions, experiment with your camera, experiment with the angles, in your perspective, and see the difference.
okay, this is root of third, that place your main elements anywhere here, here, or here, or here. You will see that the photographs will come striking. If you can see, if you draw the lines, that means it's coming here, it's eye. Okay, that's it. If you have any questions. Can you tell us some sites, should be good sites where you can upload these photos? Because I've had some really crappy experiences with Flickr. Flickr won't open for some reason often enough. Flickr has a lot of problems with the PTCL these days. Flickr is banning a lot of sites. Flickr has a lot of problems with that. I think the Remotex is a very good site because it has it gives you a good resolution of photographs that you don't find otherwise. Any other questions? अगर Facebook पे भी upload करते हैं high resolution check करते हैं नहीं, still I have tried that option as well. वो difference आपको मिल रहा होता है कि आप try when Flickr का account is free, you can just upload the same photograph there and then upload the highest photograph on Facebook. You will see the difference. Contrast में, colors में, because जब Facebook जो photograph upload करके जब display करता है ना, तो वो compress करता है photograph को, तो the quality बहुत effective है. Because आप चाहे higher or Picasa, you can directly upload from Picasa की gallery Google gallery that you can upload on that. हाँ, तो Picasa से directly you can if you have a login, you can directly log into that. They have a good algorithm as well. कोई अगर अपनी फोटोज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हो वहाँ के व्यूज के लिए Sure. I am on Facebook as well. I am on. You can add me and you can share your photos. तो बहुत से बहुत इंटरेस्टिंग पड़ जाती है Of course, you can. There are a lot of software. Photoshop भी है. Picasa पे आप directly you can get the quality and आप कितने basically compress करने से फर्क नहीं पड़ रहा. You can change the size, you can compress, but फर्क पड़ता है कि आप इतना compress करते हैं, जिससे उसकी quality जो है वो degrade होती है. फोटो क्रॉप भी दिखा रहे हैं फोटो Sorry for time, so we need to do a quick group photograph. A quick announcement. 70 होना Yamaha के लिए पीछे. आवाज बहुत fuel efficient नहीं है 125 kilo fuel efficient है. वो 100 cc brand on the brand is a brand. अच्छा ये दूध दिखते हैं ये देखो तो ये स्विच हो गया ना. क्या लिखा है इसके पीछे? Yamaha. ये किनका ब्रांड है? Yamaha. एक ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अटैच हो गया इस Yamaha के साथ. ठीक है. तो आप intentionally or unintentionally you don't go for Yamaha because nobody is buying Yamaha, right? ये बेसिकली चीज है ब्रांडिंग. एक कॉन्सेप्ट जो है वो उस चीज से अटैच हो जाता है आपकी चीज के साथ. ठीक. Now let's come to the point. और वैसे Yamaha जो है नेचुरली तो ये स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह में काफी वो है वो वाली मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की ऑफिस में लोगों की बात की है. तो Yamaha की जो हैवी बाइक है वो that is one of the best bikes in the world. Four piece of marketing, branding, word of mouth. Anyone? लोगों की तरफ से मुझे सुनते हैं कि हम बहुत अच्छी चीज की तो जैसा कि आप ये दो वालों की ब्रांड्स का व्यूज लेना ब्रांड्स का किसी भी चीज के बारे में बात मशहूर है. Word of mouth is words
the best marketing strategy. Agree or not? Yes. Okay. Word-of-mouth is the best marketing strategy available in the world, right? अभी ये चीज देखेंगे कि इसको फेसबुक जो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिन मार्केटिंग, ब्लॉगिंग करते हैं आप, सब्सक्राइबिंग, ठीक है। हर ऑनलाइन मार्केटर की एक ड्रीम होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिन ईमेल एड्रेसेस हो, यानी कि ऐसे ईमेल एड्रेसेस जो उसको स्पैम में ना फेंक दें, ठीक है। अभी इसको देखेंगे कि इस फेसबुक जो है ऑप्टिन मार्केटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। और एक चीज जिस चीज में सर्च करनी होती है, क्या यूज करते हैं, गूगल की तरफ जाते हैं, फेसबुक की तरफ, जस्ट फॉर सर्च, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें गूगल को मजबूर कर दिया कि वो सोशल मीडिया की तरफ पेनिट्रेट करे। वो क्या चीज है? Word of mouth is spread within cause social networks. So मतलब किस perception से? There are many things. आपके ख्याल में Google Plus के बारे में Google Plus तो दिया है, सीधा उन्होंने Google Plus से लॉन्च कर दिया। नहीं, मैं ये वजह पूछ रहा हूँ क्यों इसका मैंडेट था। सजेस्ट वर्सेस सर्च मॉडल, ठीक है। गूगल क्या है? सर्च मॉडल। आप गूगल पे गए, प्रोडक्ट सर्च की, प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपने बाय कर लिया। फेसबुक इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल, ठीक है। फेसबुक क्या करता है? फेसबुक आपको ये नहीं कहता कि आप आओ सर्च, फेसबुक इंटेलिजेंटली आपका जितना यूजेज एक्सपीरियंस है उसको यूज करता है, ठीक है। फेसबुक क्या कर रहा है? जितना आपका यूजेज एक्सपीरियंस है उसको यूज कर रहा है, और करता क्या है? वो आपके इंटरेस्ट देखता है, आपकी एक्टिविटीज देखता है, आपकी पोस्ट देखता है, और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, और वो आपको बताते हैं कि आपको इसका किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक डिस्कशन चल रही है दोस्तों के साथ कि आई एम गोइंग टू गेट एंगेज, मंगनी होने वाली है, ये हो रहा, वो हो रहा। फेसबुक इज इंटेलिजेंट इनफ, इट विल शो यू वेयर टू बाय द रिंग। So Google is doing the same thing. Google is doing the same thing nowadays, in the last 6 months. It's like if I'm searching cars in Google, like if I go to some site and there is about weight loss, but still I will see the ads about the cars. Like the context is the weight loss, but the ads I'm seeing is about the cars. Because the Google bots already read about me, and I'm searching about the cars. क्या गूगल के पास आपके डेमोग्राफिक्स हैं? Google personalization करता है। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक उसके पास नहीं होगा। आप फेसबुक के ऊपर बेसिक डेमोग्राफिक्स नहीं दे रहे, बट वो इनडायरेक्टली आपको सर्च कर रहा है, इनडायरेक्टली आपको पुकार रहा है, ठीक है। और आपने फेसबुक को अपना एज गलत बताई, आपने फेसबुक को अपने इंटरेस्ट गलत बताए, सब कुछ गलत एंटर कर दिया। What you cannot do wrong is the discussion with your friends, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ओरिजिनल, वो गलत नहीं है, ठीक है। अनलेस इवन अगर आप किसी सेलिब्रिटी का फेक अकाउंट बना के भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली उस सेलिब्रिटी के मतलब ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीजें जो गूगल नहीं आपको दे सकती, ठीक है। आप कहेंगे कि ईमेल, क्या आप ईमेल ओपन करते हैं, आपकी कोई जॉब से रिलेटेड डिस्कशन चल रही है तो वो ईमेल के साइड पे आपको दिखा देते हैं एड्स, ठीक है। लेकिन गूगल के पास आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पास। तो
this is a thing what makes Google sleepless. ठीक है, इसलिए Google penetrate कर रहा है इस मार्केट की तरफ किसी तरह ये चीज जो कवर हो जाए। सोशल वैल्यू अभी डिस्कस कर ली हम लोग ब्रांडिंग, आप वो चीज बाय करते हैं जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करे। ठीक है, आपको अगर ये कहा जाए कि आप कोई सादा फोन खरीद लो, दूसरी तरफ आपके पास चॉइस हो, आप बाय कर सकते हैं, आप आईफोन ले लो, आप क्या बाय करेंगे? आप प्रेफर करेंगे आईफोन के साथ एक इमेज अटैच। जब तक आप किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ इमेज अटैच नहीं करते हैं उस वक्त तक वो आपको सक्सेस नहीं मिलती। ठीक, अच्छा मैं डायरेक्टली एक चीज पे आ रहा हूँ, ये देखा किसको? चलो ये इसका फेसबुक पे आप गए कभी और इस तरह की आपको ऐड नजर आई? हाँ, सिंगल रिलेशनशिप स्टेटस लिखा है वो सदियों लग जाए। ठीक है, क्या लिखा होगा? They are now more than 2 lakh fans. They started from 50,000. अभी मैंने आपको अच्छा ये वीना मनी लिखा हुआ नजर आ गया सबको। ठीक है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चीज थोड़ी सी वो पॉपुलर की है लेकिन इशू बहुत सीरियस है। वीना मनी नजर आ गया सबको लिखा हुआ। ठीक है, और नीचे मैंने इसको सेंसर किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? number of fans, like share, like by likes by exactly. ठीक है, अब ये इमेज मैंने जहाँ से ली है बेसिकली मौलाना साहब है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, बट फेसबुक का बहुत बड़ा इशू है प्राइवेसी। दिस इज द प्राइवेसी इशू। ठीक है, वो जो आपको मैंने वो इमेज दिखाई थी गाड़ी के साथ एक्सट्रीम लेफ्ट पे। ठीक है, कई लोगों को डिस्टर्बिंग लगी, आपने कहा सोशल इशू है, प्राइवेट लाइफ में आप देखते हो कौन नहीं देखता। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फेसबुक के साथ? फेसबुक में क्या किया, आपने किसी एक्ट्रेस का पेज लाइक किया, आप मौलाना साहब है 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, आपने जैसे उस पेज को लाइक किया फेसबुक ने उठा के सारी दुनिया को दिखा। ठीक है, उसने क्या किया? सोशल नेटवर्किंग साइट तो इस तरह की शेयर हो जाए तो कोई बात नहीं, सिक्योरिटी इशू है, प्राइवेसी इशू है। But sometimes people don't want to expose their lives, what they are doing on Facebook. They should not join the Facebook. ठीक है, ये प्राइवेसी इशू है फेसबुक के साथ बहुत बड़ा। आप में से कईयों ने अपने फ्रेंड्स की लिस्ट ऐड की होगी। जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? ठीक है, कईयों ने इमेजेस हाइड नहीं होंगे, अपने फोटोग्राफ्स हाइड नहीं होंगे, फैमिली फोटोग्राफ्स। जब आप सोशल मीडिया पे तो फिर क्यों हाइड कर रहे हैं? ठीक है, जब आप वो चीजें हाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया में बैठे तो आप ये भी नहीं चाहते कि इस तरह आप किसी पेज को लाइक करते हैं तो आपका जो सोशल इमेज है वो खराब हो। ठीक है, दिस इज द वर्स्ट प्राइवेसी इशू विद फेसबुक, जिसकी वजह से फेसबुक को बहुत ज्यादा रगड़ा दिया जाता है, तो ये वाला इशू है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? स्पॉन्सर्ड स्टोरी। फेसबुक के मार्केटिंग टूल्स जो हैं उसमें आपके पेजेस, मैं फेसबुक की तरफ आ रहा हूँ, आपके एग्जैक्ट मार्केटिंग जो है वो किस तरह से आप करते हैं उसके ऊपर। आपके पास पेजेस हैं, आपके पास एड्स हैं, आपके पास स्पॉन्सर्ड स्टोरीज हैं। इसके अलावा आप किसी भी एक्सटर्नल
वेबसाइट को फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं ऐड कर, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को फेसबुक के साथ लिंक करेंगे तो बहुत सी चीजें हैं, जो बहुत से इनसाइट्स हैं जो वो आपको नहीं देगा। इसकी एक लिस्ट है, वो बाद में देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट 1 मिनट का काम है। द मोस्ट सिंपल एडवर्टाइजिंग टूल इज फेसबुक, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप अपनी एड बना के चला रहे, ठीक है। आपको क्या चीज चाहिए? आपको जस्ट एक इमेज चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, लिंक चाहिए, पेज का नाम चाहिए, इवेंट नेम चाहिए, व्हाटएवर यू हैव, व्हाट यू वांट टू एडवर्टाइज। क्या रेट होता है? चार्जेस की प्रोग्राम, ठीक है। 1 मिनट लगता है आपको, आपके पास चीजें तैयार हो, फेसबुक पे डालें, facebook/ads पे जाएं, क्रिएट ऐड पे क्लिक करें, आपको बताएगा, आपसे पूछेगा जो बता दो एडवर्टाइज क्या करना है, पेज एडवर्टाइज करना है, आपने एक्सटर्नल लिंक एडवर्टाइज करना है, आपकी अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसको एडवर्टाइज करना है, वो कर लो, वhatever जो कुछ फेसबुक पे अवेलेबल है। प्लेस को एडवर्टाइज करना है, फेसबुक प्लेसेस किसी ने यूज किया? न्यू फीचर है टाइमलाइन में भी ऐड हुआ है। फेसबुक प्लेसेस में आप में से किसी ने किसी भी लोकेशन पे नहीं किया, क्योंकि आप पाकिस्तान में वो यूज कर नहीं सकते। ये यूज होना शुरू होता है टाइमलाइन में। न्यू फीचर है कि आप अपनी लोकेशन आप कहाँ पे फेसबुक बेसिकली ये है कि आपकी एक शॉप है, फिर आपने उसको उसको ग्राफ के ऊपर लिंक कर दिया और उसके बाद आपने उसको एक पेज के साथ अटैच कर दिया। ये काम तो नहीं है इसमें। इसके अच्छा मतलब आप इनमें से किसी भी चीज को फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज कर सकते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट एडवर्टाइजिंग टूल। और उसके बाद फिर आपको जो इनसाइट्स फेसबुक देता है वो आपको और कोई नहीं दे सकता, गूगल नहीं आपको दे सकता। इसके अलावा कोई आप एडवर्टाइजिंग टूल ले रहे हैं आपको वो इनसाइट्स नहीं मिल सकती जो आपको गूगल दे देता है, ठीक है। अच्छा ये जो चीज है ये कहाँ से आती है, किसी को आइडिया हो? मतलब ये मुझे दिखा रहा है कि फलां बंदे ने इसको लाइक किया है, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऐड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड स्टोरी है, ठीक है। दिस इज नॉट ऐड, दिस इज स्पॉन्सर्ड स्टोरी। जब आप लाइक करते हो काउंट कर रहे हो फ्रॉम द फेसबुक डेटाबेस। जो फ्रेंड्स हैं वो 100 फ्रेंड्स हैं, हो सकता है 20 में से जितने उन्होंने ऐड किया हो उसी पेज को शो करो। 100 फ्रेंड्स हैं उनसे 10 मैक्सिमम लाइक को मिल रहे हैं, दैट विल ऑटोमेटिकली रीड के यार ये इसकी कम्युनिटी है, इस बंदे को ये शो कर देते हैं। इस तरह होता मुझे इस तरह से है, आपने एक पेज बनाया फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप जब ऐड क्रिएट करने जाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि I want to show sponsored stories, not ad. Ad और sponsored story में डिफरेंस है थोड़ा सा। Ad तो आप जस्ट आपने वो ब्रॉडकास्ट कर दिया कि चीज को डिस्प्ले कर दो। स्पॉन्सर्ड स्टोरी क्या है कि जब भी कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आके लाइक क्लिक करे तो उसको उसके फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर दिखा दो, इसे स्पॉन्सर्ड स्टोरी। जब भी कोई बंदा आपके पेज के ऊपर आके कमेंट करें उसको उसके फ्रेंड्स की वॉल के ऊपर दिखाओ, ठीक है। इसका ऐड रेट ज्यादा होगा जी, इसका ऐड रेट तो फिर ज्यादा होगा। हाँ जी, डेफिनेटली जितनी अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जो आपने बात की है प्राइस, ठीक है। फेसबुक में एक फीचर है टारगेटिंग का। टारगेटिंग में आप कंट्री दे सकते हैं, किस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं,
फेसबुक में आप जेंडर दे सकते हैं, एज ग्रुप दे सकते हैं। जिस तरह आपकी जो टारगेटिंग है वो फोकस होती जाएगी, उसकी प्राइस पे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कोई गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो आपको कहेगा, मतलब इतना इंटेलिजेंट है गूगल का, फेसबुक का जो एड इंजन है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो देखता है कि आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में एडवर्टाइज कर रहे हैं, चलो सस्ता मुल्क है, तो वो आपको कहेगा आप $20 में एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेम एड अगर आप यूएस को टारगेट करेंगे तो हो सकता है वो आपको $50 पे ले जाए। ठीक है, तो ये फिक्स रेट नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग ऑफ योर कंट्री, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप यू आर टारगेटिंग। जैसे जैसे आप टारगेटिंग करते जाएंगे वो साथ साथ आपको शो करता जाएगा कि आप कितने लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आपको प्राइस नीचे कैलकुलेट करके बताता जाएगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली मुझे जो आइडिया है वो either the rate is on clicks or impressions, दोनों पे कर सकते हैं। उसमें मिनिमम क्या होता है रेट? मतलब पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान को टारगेट किया, 18+ जेंडर को टारगेट किया, मेल फीमेल दोनों को टारगेट किया, तो वो आपको 30 से भी स्टार्ट करवा देगा, $30। ठीक है, $30 वो आप टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो $30 आपने कितने अरसे में कंज्यूम करना है। नहीं मगर पर क्लिक क्या रेट होगा? $30 तो बजट होता है ना, $30 नहीं होगा सर। ये कीवर्ड कंपटीशन पर भी डिपेंड नहीं करता, कीवर्ड कंपटीशन पे लाइक जिस तरह एडवर्ड्स पे कीवर्ड इसमें बिडिंग है, बिडिंग की बात करूं, इसमें बिडिंग होती है बेसिकली, इसमें भी बिडिंग है, इसमें बिडिंग होती है। ठीक है, बिडिंग बेसिकली ये है कि आपने सारी टारगेटिंग वगैरह दे दी है, उसके बाद गूगल आपको फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा कि आप जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हो उसमें लोगों ने इतने तक का ऐड खरीदा हुआ हमसे, यानी कि क्लिक रेट हमसे ये लिया हुआ, तो आप उसके ऊपर बिड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस टारगेटिंग के लिए मेरी बिड कितना $, है। जितनी आपकी बिड बेहतर होगी, आपकी ऐड की जो अपीयरेंस रेशियो है वो उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसमें सबसे आसान एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो हम ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। किसके थ्रू? फेसबुक ग्रुप्स। यानी एट टाइम हम 1000 बंदों को एट टाइम एक मैसेज करके ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और तमाम को वो मैसेज जाएगा जो उसकी इसमें ऐड होगा। मतलब ये सारे सेविंग है आपकी, उसमें विदाउट आप इन्वेस्ट करें $20 सारा आपकी जेब में आप सिर्फ एक मैसेज लिखे, तो जैसे ब्लॉग अवार्ड्स का है, आप बंदे को इन्फॉर्म होगी कि ब्लॉग अवार्ड्स पर लाहौर में हो रहे हैं, हमारे किसी के पास फुटेज ग्रुप में हम सिर्फ नॉन पर्सन्स को ऐड कर सकते हैं, जो टारगेट हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ रैंडम वो वहाँ पे नहीं ना, डिपेंड्स कि आपका ग्रुप कौन सा, आपका ग्रुप ओपन है या क्लोज है। अगर आपका क्लोज है अननोन भी ऐड तभी कर सकते हैं ना, वी नो देम। और मेरे पास 1000 हम दोनों मिलकर ऐड कर लें आपको यार 2000 हमारे बंदे ऐड डेकोरेशन ले लेती ना तो आपकी टारगेट बात इसमें एड्स में जस्ट ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों को ऐड किया, उनको मैसेज कर रहे हैं। जब आप ऐड सिलेक्ट करेंगे तो वो इंटेलिजेंटली तो देख लेगा कि मैंने किस बंदे को ऐड शो करना, ठीक है, और दूसरा वो आपकी फ्रेंड लिस्ट को भी टारगेट करेगा, नॉट ओनली दोज 1000 पीपल but the friend list of those people. It is talking about free Facebook marketing, like ये सारे मार्केटिंग टूल हैं, आप उसमें से जो यूज करना चाहिए करते हैं, पेज बना के रख लें ना, आप एडवर्टाइज करें। How can we make payment? Payment आप obviously credit card This brings us to the end of the session. So sorry for running out of time. एक दो फोटोग्राफ लेते हैं, उसके बाद almost some of them are almost even chaotic. There's really no
determining pattern for that? Okay. I think for me, since I write as a personal blog and also in the diaries category, so one of the very important questions for me is that blogging should begin with soul searching. These are very essential questions. Why do you blog? Why do you see yourself as a blogger? And what do you hope to accomplish? And do you have a blog because all of your friends have a blog and you don't want to be left out? What else is the reason? So I think this is a question I'd like to, since most of you are bloggers sitting here, this is a question I'd like to ask the audience. What are some of the reasons you blog? Why do you blog? What do you think? Someone would like to answer? You feel the need, okay, you need a platform to air your views and you don't find your other files. Okay, any other reason? Earn money. Earn money, okay, contribute to society or community. Do you blog? Do you think you're making an impact with blogging? Do you think, personally? Don't think so. Okay. But you try it. That's a very good reason because I think one of the reasons I became a blogger is that I wanted to influence the opinion of the people around me. And I think, obviously, success is a matter of degree, but I think to some extent I have been successful, at least among my group of friends. Anyone else would like to say, okay, what is I'm a physical educationist and I'm searching about the school's information regarding school kids and all that, and I didn't get enough material on that. So I thought to contribute myself and now I am doing. Your blog is the one that won the Merit Award and okay, that was good when I saw that. I think this soul-searching step is essential in my view because it defines your identity as a blogger. And this is one of the essential things. A blogger without an identity is not a very good blogger. A blog needs some set of core characteristics that people relate to and identify with. Otherwise, you're not going to go very far. Be authentic. Your blog is your voice. If you're merely re-echoing stuff, copy-pasting what what's going on the internet, which circulating industry, picking it from here and there and reproducing it, it's not going to help. You have to add your own voice, add your personal touch to it. This is one of the key elements. I think this distinguishes some of the good blogs from bad ones. Good blogs are authentic. I mean, for example, if 5 rupees says something or Kalakava says something, it's distinctly, it's Kalakava, it's 5 rupees, it's not just any other blog. It's their voice, it's their opinion, and it matters. When a voice is a name, people listen to it. But if it's nameless, it's not going to matter much. Okay, I think this is a question that's often asked me as well as you, that there are blogs who frequently post quotations and excerpts, which are almost, which seem almost like copy pasting, but they're not. They're like selections of quotes and excerpts. So, do you think a blog that sort of specializes in such things or frequently makes use of quotations or excerpts, do you think it can still be authentic in that way? What do you think about that? Any answers? Marine would like to say anything? I think it's okay as long as they're quoting the source, citing the source, referring to it. But if you're doing the typical thing that most bloggers I see doing, which entails copying and pasting over and over again, I don't think that really retains any kind of authenticity or veracity. Okay. So you think it's a sort of a fine balance, would you say that? I guess, in a way. It's a tricky thing. Tricky thing. Yeah. Any other opinion on this question? Okay, my own answer to this is yes, it is possible. And the reason, this is one of the examples that I use. This is not those quotes, the blog by Sabahat Zakaria. Maybe some of you have seen that. It's a pure quote blog, and it features blogs that Sabahat has picked out from the books that she's reading. And the characteristic thing, it's not simply producing stuff which is out there on the internet. It's the quotes on this blog are from her own experience. The books she relates to, the kind of things she picks up herself and then produces on the internet. I mean, so
these sort of quotes, these can still be authentic. I mean, even if every line on this blog is just a quote, but even that quote somehow represents Bahar. The selection of that quote represents her. It has her voice, and therefore that's a very good way. Her blog has that authenticity. That's one of the ways. So these are some examples from my own blog. The quotes that you say how to build a universe that doesn't fall apart 2 days later. Another quote was from studies on hysteria of Freud, and from unbearable lightness of being, and 36 arguments from the novel. So these quotes are not such that you will find roaming around on the internet. These are somewhat rare, somewhat uncommon. So even if you see them, they reflect a sort of a taste. They reflect the blogger's taste, his mind. Because one of the things that I've learned is that the readers of your blog are not just interested in your thoughts, they are also interested in what your tastes are, in what you read, in what you like to see, the sort of music you appreciate. So these things also matter, and reflecting them also reflect as part of your authentic blogging. Okay, one thing is the rise of the tumblers. Okay, I think one of the characteristic features in comparison is that contents are frequently and commonly reblogged from one Tumblr to the next, often thousands of times. I think it's basically an endless process. Yet it is not a mere copy-pasting exercise, and authors often add their own thoughts and comments on the reblog stuff, and you can reblog and bring together material that suits the niche of your Tumblr. So how many of you happen to have a Tumblr? Okay, do you think there's any significant advantage to having a Tumblr over a blog? Go ahead. Tumblr, in a way, is a lot more interactive than WordPress or Blogspot or Blogstress. You can comment right then and there. Reblogging adds a lot of commentary on your own. You can also do a lot of live blogging. Newsweek USA just started using Tumblr. Salon did, Feministing did. Everybody's moving towards Tumblr. Even now Pakistani newspapers are too. So Tumblr is kind of replacing WordPress and Blogspot now. It's getting a little... You think the Tumblr... Even though Tumblr has a lot of, like, we have exactly like Tumblr, we had Delicious before, and StumbleUpon, and they follow the same concept, right? Okay. But blogging gives us like more fluidity and more flexibility of what we want to do. Like, okay, you feel more comfortable using the... Because I will want to customize and do a lot of stuff with my own blog. Anyone else who would like to say anything on the Tumblr? What would you personally prefer as a reader? Would you like Tumblr more or blog? Let's move on. Okay, just going to follow some standard tips that exist on blogging. Especially, I don't put that much value on them because, like I said before, you cannot reduce blogging to a conceptual formula. So listen to them because they're important, especially for those who are beginning their blogs or in the stages. So they're good for them. But for eventually you have to work on them. So how to choose a topic? I think whenever an idea for a blog hits, you don't rush into it. It's my own personal experience that every idea needs some time before it's ready to be posted. And I think most ideas need a little molding and marination. And one of the results is that they may end up evolving into something entirely different. And it's also possible that you may end up deriving many other topics from it if you think about it. One of the ways to keep down ideas is to jot them down. However, if you have a good memory, then let them just stay in your mind and let them go. This is the best way. This is the one I use. And brainstorm over this point. You don't have to actively brainstorm them, but if you let the points reside, ultimately in a few days, you will notice that even subconsciously, you would have gathered many supporting or motivating points. Identify a need. If you focus on your on the readers,
you can sort of you can identify what sort of questions haunt them, what sort of questions they think about, if they have problems that you can address. And if you have a loyal readership, then understanding the mind of your readers definitely helps and guides you in the selection of the topic. People refer links to read and blog posts to read, and usually the reference goes by the blog post title. Now, if the blog post title is somehow catchy, if it somehow tingles my interest, then I'm likely going to open it. Otherwise, I'm just going to let it slide. So, these are some of the tips about what you can, about how to make a blog post title. One is communicate a benefit. For example, you can say 10 ways to earn money from blogs. This way, this is convenient for those blogs which want to gain readers, especially from search engines. Because when people search for such stuff, they will ultimately land on your blog using search results. Create controversy or debate. This is one of my own titles from my own blog, True as a Myth. So this presents a certain idea, it intrigues a certain controversy, certain debate, and the reader is likely to click and proceed. Ask the question. For example, you can ask, can Islam reform? This could be the question, and all those who are interested in this topic, they're likely to visit your blog and see what it's about. You can use keywords. For example, simple, postmodern art. The advantage of this is, again, this is useful for search engines, it's useful for hashtags on Twitter, and it's useful for people finding about what it's about that you're blogging. Or you can use a humorous title, it varies. This is from this title is taken from a blog by Hamster, Pindy Boy, many species of EP bloggers. When it comes to content, you can add depth by using examples, you can use analogies, you can story, the narrative, metaphors. These are all basic things, and I'm sure you're all aware of that. Adding your own opinions, suggesting further reading, adding roles, adding illustration and charts. Okay, take your time in writing posts. Don't rush into it. I mean, write it down calmly, unless you have a deadline. I mean, that's a different situation. But otherwise, take your time. Do spell check before hitting the publish button, because spelling mistakes really do create a bad impact. Reread your post to see how they look from a reader's perspective. This is important because it will also help you improve. And I think those who do practice this, practice of rereading the post, they often do end up making significant amendments to the final output. And if you are unsure, have someone else look over your post. And if you are linking some other posts in that or articles, do test if the links are working. Because oftentimes you link something in haste, and when it's published, it's not working. This is some of the things that I found on the internet, that very few people these days read websites word for word. Most people read online by scanning the page for individual words, phrases, and heading other visual cues. So bloggers who want to communicate effectively should look into whether their blog is scannable. And then, sorry, but we have 5 minutes. Okay. And an easy way to do it is to ask a friend to go over to your blog and over a short period of time and see how much he's able to garner. These are some techniques to make your blog scannable. You can use lists, you can use formatting, but the point about formatting is that you don't have to overdo it, because that will become annoying and frustrating. You can use headings, subheadings, you can use pictures, orders, blog codes. Don't clutter it, don't jam it up. Make sure that the text is surrounded by adequate space so that text is visible clearly. And find creative ways to reinforce your main points so that the readers, when the readers read the post, they remember what you have to say. And don't introduce too many new ideas in one post. How long should the blog be? There is no hard and fast rule. I think, but typically a web reader has a short attention span. So ideally, your blog post is as small as possible. That would be good. My own blog posts are pretty small. I think some of the other blogs are also pretty good. Generally, it says the attention per blog is about 90 to 100 seconds of an average internet user. So keep that in mind. How often should you post? Ideally, whenever you feel the need for it, but don't force yourself.
However, do maintain some degree of regularity, avoid writer burnout, don't write so frequently that for weeks you end up having nothing to write about, and also avoid reader burnout. If you're posting very frequently, then readers are going to be fed up. So avoid that. Calls to action. This is what most of the visitors to your blog will be passive ones. So just read. They won't comment. They won't link a friend to it. They won't email your post. One of the simple ways to counter that is simply ask. If you want people to comment on your post, ask them to comment. If you want people to link your blog to other people, ask them to link. So, but then again, don't overdo it, because then you sound desperate and annoying and frustrating, and that won't help either. As a blogger, it is very essential that you read other blogs. I mean, you don't have to read everything that's out there, but at least a certain small list of blogs that you are personally comfortable with that you read. Because it is one of the ways of improving. You yourself evolve as a blogger by reading other good material out there. And on other blogs, leave educated comments and interact and make friends. And this is important because blogosphere is probably some of the best friends that I have. I think if you don't visit other blogs, you don't interact with them, you're going to miss out on that. These are some tips. Draw ideas and inspiration from your own life. It's also important that you experiment. If you're writing in the same style again and again and again, it's going to get boring, it's going to get monotonous. So experiment, branch out, try different styles. Even on my own blog, from time to time, I try different techniques. I learn from other bloggers, try to see it in ways. And one of the efficient ways to educate yourself about any topic is to blog about it. This is a way to learn and improve yourself. If you can't think of anything to write, leave it, come back. Okay, guest blogging is also one of the tips when you're running stale with content. Blogging ideas when you're struck. You can write a review of any movie, any book that you're reading. You can write about what's in the news. You can do an interview or post material. And find your niche. Develop your own personal signature style. If your blog specializes in a particular area, it helps in developing a loyal readership. But on the other hand, it would be bad if you limit yourself excessively. On the other end of the spectrum, if you go for a generalization, your blog can be about anything and everything. But here you have to be aware that the content should become trivial. Okay, let's look at some examples of successful blogs and the techniques they're using. Okay, this is first is Mary Kisana's blogging. Many of you would have seen it. It has created a niche for itself. It specializes in doodles, sketches, and cartoons, and uses humor effectively. So I think this is one of the good ways, one of the good techniques to use in the topic. Okay, this is one of the relatively, I think, unknown. It's not that famous, but it's good because each blog posts the haiku about Lahore. And it posts infrequently, but the content is very original, creative, and it is very highly specialized. So it has a loyal readership who eventually do come back to read whenever there's a post. This is one of the blogs that I read regularly. It's Maverick Philosopher. It's a serious philosophical blog, often technical, but it has a loyal readership. And blog content shows strong opinions and integrity, thought-provoking and engaging argumentations. And one of the interesting features is that it has comments disabled. This blog has 15,000 views per day, but it doesn't have comments enabled. So this is, many bloggers think that it's very important to have comments beneath your blog post, but this blog shows that it's not important. Even if you just focus on the content and provide quality writing, people are going to come. And however, this does encourage feedback via email. Okay, this is I think Abdullah Tariq's blog. I think most adolescents could have gone through it at some point. I think it offers raunchy humor and its popularity is self-explanatory. This is a blog by Salman Reed, and it's about keeping up to date with the latest developments in science and religion. And one of the reason why I picked up is that Salman Reed usually posted with a secular point of view. He was usually posting with religious criticism. However, since a year, he has offered guest posts by Nizar, who is an astrophysicist, but he is a Muslim, and who writes about the interaction between Islam and science from an Islamic point of view. So when he started offering guest posts,
the content became much more attractive. There were opinions from both sides, and it really helped, really boosted the blog and brought it to light. This is an old blog, which maybe some of you remember it. It was from, I think, 2008, 2009. It's no longer active. And it's an excellent example of creating a unique personal narrative. The blog was about a certain Miss Vex, as she narrated her experiences with family, education, job, and especially the rishta hunts. This is a copy-based material by Karachi Khatmal, I think this is a very popular blog and a very excellent example of using a signature style. Using an interesting technique of unifying intriguing and apparently disturbing photos in a blogging narrative to convey a point. It's really difficult to describe what this blog is about. All of you should definitely go and check it out because you'll see some pretty interesting content. Okay, I also, as a part of this presentation, I also asked some of the bloggers what they think is the secret of a successful blog. So you have listened to me for half an hour, so you can also listen. Just a minute. This Amber Lucky, please you will get a successful blog with this thing, Stacy is a legend, consistently relied, not as much as style and mode of language. And Amber Lucky feels that comments are very important and they are the lifeblood of the blog. Mary Kasana said that in order to run a popular blog, you need to do the yourself. Because after all, your blog is about yourself, and the way you articulate your thoughts with humor, style, and recipe, she herself uses videos, so that's her this is one he thinks that if the blog is what creates either meaningful activity, meaningful creativity, and it gives a sense of fulfillment, then it's a successful blog. This is Ranja Kadri, who posts often romantic fiction, and her advice was that if you keep the content concise and to the point, and if you focus on the content and you use the distraction from blog, it's going to help. And Pastor Kapadia said advice that you should focus on the content and you start out with great videos. Alright, ready? Okay, thank you. So we did collective group photograph outside, so you all need to come over there, and then we head out to the cafe.